Audio, video, everything clear. Welcome user 824732. Welcome on the live stream. First user. Nice. As you are a first user, if you are a new user, do tell me because I have one Dogecoin completely for free of cost for all of you people. Okay. So let me just check. Audio is coming, video is coming. I'm live in the app. Where is it? Where is it? Where is it? Yeah. As you are a first user, if you are I'm live. Okay. Do tell me because I have everything is perfect. So let's get started. Hi, ladies and gentlemen. Welcome to the zbitlive.com. Thank you so much for joining this live stream. Thank you so much for being a part. This is a zbit.com's live stream in which we take care of everything related to the crypto world. Your queries, your doubts, your questions, you're learning, you're inputting the more good educations which is required for all of you people to learn the future trading, to learn the crypto trading, to learn every of those things. Plus, how better you can understand the zbit.com app. Like if you have any issues, any problems, okay. Uh, User 824732, you are from India, so I'll start with Hindi. अगर आपको zbit.com अभी तक यूज करना नहीं आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर पूछिए। मैं आपको हर एक ऑप्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें मैं जरूर आपको समझाऊंगा। अगर आप जानना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो, यूजर 824732, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक मार्जिन कैसे लेते हैं, लेवरेज कैसे लेते हैं, ये तीन टाइप के ऑर्डर जो वहाँ पे लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर, ये सब चीजें क्या काम करती है, ये अभी तक बहुत से लोगों को कम पता है। एंड वो पूछते भी नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप जो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, अगर उसी प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपकी ट्रेड कैसे राइट जाएगी। उन सब ऑप्शन का एक कॉमन कॉम्बिनेशन यूज करके सक्सेसफुल ट्रेड कैसे लेते हैं, ये सब चीजें ही आपको नहीं पता है तो आप फिर कैसे, लाइक आपका ट्रेड जर्नी कैसे अच्छा होगा, राइट। सो आज अगर किसी को भी कोई भी डाउट आता है, आप नए यूजर हो, नए यूजर को तो स्पेशली मैं बोलता हूँ, अगर कोई भी नया यूजर होता है सबसे पहला उसको सवाल होना चाहिए कि यार मैं zbit.com यूज कैसे करूँ। ऐसा तो है नहीं कि एकदम आप ज्वाइन करते बराबर ही आपको सब कुछ पता चल जाता है कि क्या क्या है, क्या क्या है, क्योंकि हमारे रिवॉर्ड्स भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे छोटे छोटे कम कम रिवॉर्ड्स, हमारे रिवॉर्ड्स भी बहुत सारे हैं। वेलकम यूजर 773695, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आप नए यूजर है, कोई भी एक नया यूजर है, तो मैं उन सब लोग को बता दूं, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ क्योंकि फिर वो बार बार बताना से अच्छा यहाँ पे लिख देना बेहतर है। वेलकम यूजर 773695, यार मुझे एंकर नोट लिखना था ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगर आप नए यूजर है, कोई भी एक नया यूजर है, यार ये एक जगह पे टिकते नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। ये मुझे एंकर टेस्ट ही करके बार बार बताना से अच्छा यहाँ पे लिख देना बेहतर है। यार मुझे एंकर नोट लिखना था यार, ये एक जगह पे टिकते नहीं है ना, यही तो दिक्कत है। ये मुझे एंकर टेस्ट ही करके बार बार बताना से अच्छा यहाँ पे लिख देना बेहतर है। एंकर्ड वाला कुछ नहीं होगा ना यहाँ पे, फिर मुझे एंकर्ड वाला ऑप्शन देखिए, ठीक है। तो सारे नए यूजर के लिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। इसको अगर मैं और बड़ा कर सकता हूँ तो मैं और बड़ा कर देता हूँ। आई गेस 40 इज ओके। एवरी न्यू यूजर 1 डोज कॉइन आपको फ्री मिलता है। अगर आपको, बहुत से कम लोग होते हैं जिन्हें ये पता है, अ लॉट ऑफ वेरी लेस पीपल नो दिस वन थिंग, दैट ऑल द न्यू यूजर गेट्स वन गिफ्ट from my side. This is a live stream gift, okay? This is not the app gift. Zbit is not offering you this. Yash, I'm offering you this. Okay. For all those people who comes to my live stream, for all those people who joins my live stream, for all those people, I give you a gift only for the new users. This is not for the old users. It's only and only for the new users. Okay. So if you want to get hold of this new user gift, which is a 1 Dogecoin completely for free of cost,
Do tell me in the comment section and I will help you how to achieve that new user gift of one Dogecoin. Okay. Now, as we were discussing what is the title says, what we discussed for 2 days, I'll give you a little recap about it. Okay. First, my name is Yash, and I am a live stream host over here who will be taking care of your crypto journey for the next 4 hours, right? Okay. And even if you want to be a part of my guidance, or if you want me to help you in any scenario, even after the live stream, even after live, because live stream is just for 4 hours, I will go from 12 to 4. That's it. After that 12 to 4, what? After that 12 to 4, I have to do something else. I have to make sure that you all people are still positive, still profitable, and any of your doubts, any of your problem comes, I am there to solve you. Now, where will you contact me in such situations? You can contact me through this. Can you see a more option over here? Yes, click on that more option and you will see the first option itself, join Telegram group fans. The first option itself, you will see, click on this first option and you will be taken to where? To my Telegram channel, which is called as Zebit.com live with Yash. That's my Telegram channel. You will be going to my Telegram channel over here. Can you see Zebit.com live with Yash? Yes, this is the channel which you should be knowing about. You join that channel and you will open a lot of opportunity with that one channel. It's not just one thing, two thing, three thing. No, first you will get the market updates. Every of those market updates will be given to you. You will be given some signals as well. If I see a very strong signal, see, I'm not gonna give you signals which is like maybe can happen, maybe won't happen. No, those kind of situations, those kind of signals I don't provide. The signal which is very strong that yes, this trade will be 110% successful, those signals will be provided in the app as well, in that group as well. Plus on top of that, if you have any doubt, anything at any point of your life, even after the live stream, you want to get help of me, you are not understanding something which you need to understand in an urgency, you can contact me in that group. I am available 24/7 in that group. Whenever I get a time, I will respond to you and I will be helpful for all of you, whatever problem, whatever doubt, whatever query you people are having. Understood this one thing? So what we need to do is make sure to join my Telegram channel. Okay. Telegram channel is very important because you can get a help of an expert even after the live stream. Because for a lot of people, live stream is that one place where they come here to gain knowledge, to solve their doubts, queries, every of those things. But even after the live stream, there is an option for all of the people, which is this option, which is called as what? Which is a Telegram group of R. Okay, it's specially mine group. There are two groups right now. One is the main group in which you cannot text, you cannot reply, you cannot forward any kind of messages. Only the admins can message it. That's a one main group of the Zbit. Other than that main group of Zbit, there is my Telegram channel group. Where is my Telegram channel group, in which what happens is you can type, you can text, you can do whatever you want to do with it. Okay, you can uh, send messages, send opinions, anything. It is available for all the people only in my Telegram group. Only on my Telegram group it is available. Okay, do not forget it. Welcome user 955813. Welcome on the live stream. Other thing which I want to tell you is that all the people, there is a new something, a gift kind of stuff over here. Now, what is that gift kind of stuff which you can see on the screen over here? If you click on that gift, you will see that there is two offers for all of you people available at right now for it. One of those offer is deposit and claim $200 future credit. Deposit and claim 200 future credit over here, in which what you need to do is just plain and simple deposit 20 USDT and you will be gaining a 200 USDT worth of future credit inside your account, which will be only used for taking a trade in Ethereum or in the Bitcoin. Okay.
After that, whatever profit you gain from it, whatever XYZ profit you gain from it, that is completely your profit, which you can use for withdraw as well, which you can use for anything, whatever you want to do. Okay, you can use it for withdraw, you can use it for the next trade, anything, whatever you feel like doing it, you can do it. Okay, now next thing is a future contract trading gift. Now what is a contract trading? Contract trading is means like it's a future trading basically. Whatever Zbit has only one option of contract, that is a future. We don't have options, we only have futures. So in that, let's say if you take a trade worth of 1927, a trade worth of 1927 dollar worth of trade, if you take, okay, which is basically 1930, consider 30 because $3 is there, so like leave it $3, 1900. If you take a trade of uh, if you take a trade of 1930, then you will be receiving what? You will be receiving not the small amount of money, but you will be receiving a big, huge amount of profits plus spot coins. Now, what is that? First thing, if you take a trade worth of 1927, obviously what you will be receiving is, if you take a trade of $1930, you will be receiving first thing, which is a good amount of big investment trade, which can help you earn a big amount of profit. First thing. Second thing which you earn is on those other 7 days. Once you take the trade, after that 7 days, it's just gonna bring the benefit and benefit to all of you people. How? As you can see, like we are offering you spot coins just for taking a trade worth of 1930. Just for taking trade of 1930, we are giving you spot coins, not just any other coins. Okay, to be very frank, to be very fair, we are not going to give you any random coins. No, you can clearly see which kind of coins you will be receiving in the market as well. As you can see, on the day one, it's Ethereum. Day 2 is a Dogecoin. Day 3, we give you XRP. Day 4 is a Shiba Inu. Day 5 is a Pepe coin. And day 6 is a Solana. And day 7 is a Bitcoin. Can you just imagine that not just any other coins, but you are getting two major coins, which is Ethereum and Bitcoin at first place. Then you get the two major altcoin, which is XRP and Solana. And on top of that, the world's most famous meme coin, which is Dogecoin, Shiba Inu, and Pepe. All these 7 coins can be yours and yours completely if you make sure that you take a trade of how much? $1930 worth of trade. You are going to be in a profit only. Do not think that you will be in a very heavy amount of loss or something like that. Don't think that you are going to be in a heavy amount of loss or something like that. No. Why? Because if you take a trade of 1930, a short trade, which you can ask me in the group as well. I've told you like to join the group. If you join that group and you Ah, if you join that group and you be a part of that, and you ask me that I'm going to take a trade of 1930, I will make sure to give you a very promising trade which can help you earn profit as well. So just by taking a trade of 1930, you unlock first a promisable trade which can give you profit. Second thing is 7 different spot coins you receive. 7 different spot coins, not one, not two, not three, not four, not five, not six. 7 different spot coins in 7 different days you will be receiving. It's a rally which you can have. Welcome user 162635. Welcome on the live stream. I'm explaining you two rewards right now. One is a deposit reward. If you do a deposit of 20 USDT right now today, I will give you 200 USDT future credit on your account right now.
which will be helpful for you to take a trade on Ethereum and the Bitcoin. Okay. So if you want to earn a free deposit of 200 USDT, it's not a small amount. It's not a small amount, it's a big amount. If you want to earn a deposit of 200 USDT, what you need to do is very simple. You need to do a deposit of 20 USDT. Okay, inside my live stream, obviously, you have to click in the live stream, deposit, and then only deposit 20, and I will help you in gaining how much? 200 USDT. Got it? Okay. Now, contract trading gift, 7 days of, like I was explaining you this, like if you take, first of all, obviously you need a deposit. So deposit also should be done from 1,930. Deposit should be done from live stream only. Okay. First you will do the deposit. After that you will just take a trade in any random, like whatever. There is no such rule that you have to take a trade in specific trades like Ethereum or something like that. No, you can take a trade wherever you want. The next thing is you will be getting 7 different spot coins in 7 different days. That is an amazing gift. First day you get Ethereum, second day you get Dogecoin, third day XRP, fourth day Shiba Inu, fifth day Pepe, sixth day Solana, and seventh day you get BTC. Okay, so these are the 7 different spot coin which you will be receiving in the 7 different days. Okay, so please make sure all of you people that do complete. This is a gift made for all of you people. This is not for me, obviously. This is only and only made for all of you people. So make sure to understand and complete this gift. Make this gift, achieve this gift, so that you can have a lot of good amount of profit in your life. Okay, now coming back, welcome user 705186. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. Please, I would love to tell you that I have created an account of Telegram, which is basically a group. It's a Telegram group in which I am available 24/7 over there. I provide you market updates, I provide you market signals, trade signals, or any kind of help you require from my side. Any kind of help. I am ready over here on this platform for all of you people help. Got it? So please make sure to understand this situation that you need to join the Telegram group for access of all the market updates and every of those things. If you do not access the first group, not the second one. Okay, second one is the main group. But if you want an access of the uh, like my help group in which you can text and solve your queries, this is the first one. Telegram group fans, just click on this. It will take you to where? It will take you to, yeah, zibit.com live with Yash. That's the group in which you should be having each and every of those updates regarding the market. Do not forget. Okay. So please make sure to join this group. Please make sure to join this group over here. Welcome user 491582. Welcome on the live stream. Do not forget to join this group over here. Okay. This Telegram group is the most important thing which you need to join. Now our coming back to our topic, what we discussed yesterday. Let's have a small recap about it, everything for the people as well, all the people who are inside the live stream, who didn't join the live stream for 2 days and doesn't know what this title is about, what this topic is about. Let me give you a little gist of it. First thing, what you need to do is you need to make sure first thing you need to make sure that this is for trading. This topic understanding is for trading. This is not just random knowledge about the trading. No.
This will help you in achieving profitable trade in future. See, for spot trading, it is useful. I'm not saying that it is not at all useful for the spot. For spot trading, it is also useful, but you have to understand that ah, for spot trading is useful, but you have to understand this thing, that this chart pattern can give you a daily profitable trade. A daily profitable trade can be achieved from this chart patterns for all of you people. Okay, so you need to understand that this topic is regarding understanding how you read a market. Can you see? One second, I will show you. Yeah, this is the market over here. This is our market, right? This is how our market looks like. Now this topic of today's topic helps you understand. Now today's topic helps you understand everything, like how to read the complete market overall, how to read a complete market, like what this talks about, how to identify the triangles, how to identify the market, how to identify certain drawings in the market. Because chart pattern, if you talk about in a market language, it is called as pattern. But if I talk about a normal language which people can understand, it is called as, it is called as normal drawing. You can call it a drawing. You just have to find a drawings in the market, nothing else. Okay, you just have to find drawings in the market, which I have already showed you 6 drawings. Now there are some more drawings which is left for us to discuss. We'll discuss those drawings and when they will move forward. Okay, in stop. Welcome user 359501. Welcome on the live stream. Thank you so much for coming down to this live stream. Thank you so much for being a part. Thank you so much for everything. Okay. So as we were discussing this one thing, that this topic of chart pattern is regarding how you can understand the market and predict it. If the market can go long or if the market can go short, you can know it very easily. Okay, you can know it very easily over there. The only thing which you need to do is just understand chart patterns. I'm not saying that every candle will tell you everything. No, not every candle. Like for example, in a school we have learned this, right? There was a complete lesson, but in that lesson our teacher used to underline the important thing. Now that is that important thing which is called as chart pattern. That important thing is very important for us to know. Rest of the time is just like fillers. Consider that the same thing when the teacher used to teach us regarding the lessons in the schools. All these things, the middle things, are fillers. The specific things, the underlying important things, are chart pattern which we need to understand and which we need to find in the market, so that we can achieve a high amount of profit inside the market. Okay, this is what we need to find in the market. There are two types of chart patterns. You can call it as a drawing as well. There is no such things like you have to call it pattern only. It's whatever. You just have to find those things in the market. That's the main deal. So first thing is, like, there are two types of chart patterns. One is a continuous ones and one is a continuous chart pattern and one is a reversal chart pattern. Okay, there are two types of chart patterns over there. It's whatever. You just have to find those things in the market. That's the main deal. There are two types of chart pattern over there. Okay, so one we what is there? Continuous chart pattern and reversal chart pattern. What do you mean by continuous chart pattern? As we all know this one thing, that every chart pattern talks about one thing, which is, every chart pattern talks about one thing, which is a trend. A trend either will continue or either will change. That is what we talk about, right? So in here, in this market, in this place, there are two types. One, we can have an uptrend. Chart pattern will form, an uptrend will continue. This is continuous one, up to up, continuous chart pattern. Okay, my head is not working today because of this cold which I'm having. It's paining.
It's not easy to breathe as well. Okay. So as we were discussing this one thing, yeah. What we were discussing. Continuous chart patterns. Continuous chart patterns means what? That market will go up, it will form a drawing, and it will go again up, or it can fall down. A drawing will form and it can fall again more down. This is called as continuous chart pattern. The trend is continuing over here. It is not changing. Whatever trend was there in the market, it is continuing the trend, not changing any sort of trend over here. Other thing which we are discussing today, which we are discussing right now, it is a reversal chart pattern. Reversal means what? Reversal is basically changing the direction. Reverse. Whatever the direction is given, it will reverse it. Simple, very simple understanding. Up will become down by the chart pattern, or down will become up with the help of chart pattern. Simple, easy. There is no such hard thing to understand regarding it, right? Now, the hard thing about it is that you have to have that eye to catch those trends. The eye is very important. You should find those W's, those M's, those head and shoulder pad. See, till now I discuss uh, double top pattern, which is also your M pattern, double bottom pattern, which is also your W pattern. Then I discussed triple top, triple bottom, head and shoulder pattern, and inverse head and shoulder pattern. Six patterns we have already discussed of the reverse thing, of the reversal chart patterns. Today, I hope I will finish it today. It is my health should stay with me. Okay. So today we will finish this chart pattern. Today we will finish whatever it is going on, whatever kind of pattern is there. Every of those things will finish it. Okay. There are triangle patterns left. There are rising wedge, broadening wedge. These are the chart patterns which are left in the market. Okay. We will discuss all those things. The main thing in the chart pattern, like I said to you, is that you need to find the pattern in the market. For the people who don't know, understand the drawings, who don't know how to find drawings in something, then those people might feel difficult in finding the chart patterns. But if you are that person who can find drawings in anything, then chart patterns will be the most easiest thing. And trust me, this can actually help you predict the market even before it falls. Even before the market is falling, you can know that the market is falling. That strong a chart patterns are. That's how strong a chart pattern behaves. Even if the market is falling, not falling, does not matter. He will tell you, it will tell you regarding every of those things. Even before falling, even before rising, even before having a crash down or any of those things. The market will tell you regarding that XYZ thing before anything. As you can see on over here. Yesterday's one example why the chart patterns are very important. See, this is a head and shoulder pattern. Shoulder, head, shoulder. From here, we buy, and this is the movement which we can capture. Can you just see how huge amount of profit we can gain from a simple chart pattern? The people who knows regarding chart pattern, they can know, like, even before entering into the market, even before trying to go predict or anything, once they see an inverse and a shoulder pattern, they know, like, from here a breakout is gonna come and we are gonna have a straight up jump for xyz whatever it is. Just with the chart pattern we can predict the market even before it happens. Even before anything happens, we can predict the market. So such types of chart pattern we are going to discuss, the leftovers of the reversal chart pattern. Let's continue with it. Today I'm not going to read the news because since 2 days, but there is one great news, which not a great news, but kind of maybe, like, see, the Trump in 2026, he has a lot of plans. Okay. And those plans are the such kind of plans which can have a very negative impact or can have a very positive impact in the market. Okay. So the first negative impact which we can have in the market is the crash down.
in the recent, maybe in the yesterday itself, yesterday, in yesterday some conference he was having, some XYZ conference he was having, and those plans are the such kind of plans which can have a very negative impact or can have a very positive impact in the market. Some XYZ conference he was having, and in that XYZ conference he told a lot of people that he is going to take over the Greenland. Greenland is a place, it's a, like a very surrounded by the sea, so there are a lot of ports, boats, access, and all the seas are there. Plus, it's mostly covered in the snow, so it's not that much of like minerals are there. But yes, still you can find natural minerals over there and oil and blah blah kind of stuff maybe. So in that situation, what happened is then when he said that he's gonna take over to the Greenland, he's gonna do one very normal negotiation with them. If they agree with the easy way, it's fine. If they don't agree with the easy way, then they are gonna like take over with violence or with force. They will take over the Greenland under their USA. Okay, now why is he doing that? As for the response of why is he doing that, he responded that because if I don't do it, then Russia or China will be doing it, and he doesn't want Russia or China to be his neighbor, something like that's what he quoted in that conference. Okay, that he doesn't want Russia, that he doesn't want Russia or China to be his neighbor to come and take over the Greenland, which is they are going to do. He may have got some intel from XYZ. Like, see, every country has their own spies and every of those things. So he must have got some intel like this may can happen. They can do this kind of stuff and blah blah blah. And due to which this thing that he's gonna take over to the Greenland. I really have no idea why Greenland is famous. Like, let me just, you can check it later actually. Check it. The Greenland, yes, the Greenland thing we can check it later. Okay. So as we discuss this one thing regarding the market, like impact can be there. This is the two to three things which is shared with us. These are the two to three things which is shared with us. There might be more stuff which is not sharing with us or something like that. I don't know, which he might be planning and we don't know about it. So if we, I would suggest a lot of people not to take a lot of trades in the market. And even if a chart pattern forms, don't trust those chart patterns for right now moment. Because see, a chart pattern is a regular chart, a regular trading. But whenever such news comes, then irregular trading happens. Why? Because a panic state, rather than doing the normal buy, normal sell, people will extremely go for one side. And that may make your chart pattern go wrong. Right now, even on the day time frame, I told you this one thing yesterday, that I clearly can see that the market is staying at one, like taking a resistance at one level. That this is that level which the market is taking resistance at. Let's start with our pattern only, because this is the most recent pattern which is made by the market, which will be very easy to understand. So before starting, I just told you this two important news which I wanted to share with you all people. Shaman, welcome on the live stream. Shaman, Chaman, or Chaman, I don't know. It's very that username. Like, yeah, your name is Chaman, really? Damn. It's, that's your really name. Your name is Chaman. Like, for real, your name is Chaman. User 1026005 4. I can see that your before username, your name is written as Chaman. That is it, really your name. Like, your name is legitly Chaman. Bro, please do tell me in the comment section, okay, that you're really the real name of your is Chaman, because I got intrigued. I didn't want it to you like say your name out loud, but yeah, it triggered me and I said it.
Welcome user 595508. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. Thank you so much for coming down. I really appreciate each and everybody of person coming on this live stream. Today we are gonna learn about reversal. Yeah, my name is Chaman. Like say your name. Damn, bro, your name is Chaman, bro. Shit. No disrespect, but it's not even a nickname, right? It's not even, it's like a full, like your Aadhaar card is having the name called Chaman, like Chaman. How do you pronounce it? You can't say to me because it's a text thing which you can say, but Chaman, Chaman, Chaman. Damn. I don't think so. You were the favorite kid in the family. How do you pronounce it? You can't say to me because reversal chart. Chaman, Chaman, Chaman. Reversal chart patterns. Okay. Damn. In that reversal chart and Chaman, by the way, there is a new user gift which is a one Dogecoin free which you can get from my side. My name is Yash. Okay, so if you want to have one Dogecoin completely free of cost, and I haven't seen you in my live stream, so I'm like suggesting. I think that you are the new user. Okay, अगर आप नए यूजर हो और आप कभी भी इसके पहले मेरे चैनल पे नहीं आए हो, लाइव स्ट्रीम पे नहीं आए हो, तो आपके लिए एक नया यूजर गिफ्ट है जो है एक डोजकन फ्री में। तो अगर आप एक डोजकन फ्री में कमाना चाहते हो तो प्लीज लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताओ कि मैं नया यूजर हूँ। क्योंकि कंफर्मेशन तो दो पहले कि आप नए यूजर हो, एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये एक डोजकन कैसे मिलता है। ठीक है, अगर आप नए यूजर नहीं हो तो उन बाकी नए यूजर के लिए हमारे पास एक बड़ा, उससे भी बड़ा गिफ्ट जो है 20 USDT डिपॉजिट करके आप फ्री में 200 USDT ले सकते हो। कितना? 10 गुना ज्यादा। डिपॉजिट कितना करना है? सिर्फ 20 USDT। मिलेगा कितना? 200 USDT। 10 गुना ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे आपको आपके अकाउंट में रजिस्टर करके मिलेगा। एंड ये जो प्राइस है ये आपको ट्रेड लेने के लिए काम आएंगी। बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके बड़ा ट्रेड ले सकते हो इथेरियम या बिटकॉइन में। जहां पे भी जैसा भी आपको प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से आप विड्रॉ कर सकते हो। जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसको आप विड्रॉ भी कर सकते हो या फिर दूसरे ट्रेड में यूज भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी होगी। ठीक है, वेलकम यूजर 909397। तो ये दो गिफ्ट है जो अभी फिलहाल में सब यूजर के लिए है यहाँ पे। पहला है न्यू यूजर गिफ्ट। अगर आप नए यूजर हो तो आपको एक डोज कॉइन फ्री में गिफ्ट मिलता है। अगर आप नए यूजर नहीं हो, अगर आप नए यूजर नहीं हो तो फिर आपको मिलता है ये चीज विच इज, अगर आप 20 USDT विड्रॉ प्रोसेस क्या है? विड्रॉ का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। ये अपना ऐप है, राइट? ये अपना ऐप है। अभी इसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन। एक तो आप ये बैलेंस में जाके ना पहले आप बैलेंस चेक करो कि आपका विड्रॉ कितना है आपके पास। ठीक है, आपको फ्यूचर का पैसा विड्रॉ करना है या फिर स्पॉट का पैसा विड्रॉ करना है, आप ये चेक कर लो एक बार। या न्यू यूजर, एक सेकेंड चमन जी, एक सेकेंड, मैं इन लो यूजर 909397 को मैं समझा देता हूँ विड्रॉ का प्रोसेस क्या है, आप भी सीख ही लो। सबसे पहले तो आप चेक करो कि आपको पैसा कहां से निकालना है। आपको फ्यूचर से पैसा विड्रॉ करना है या फिर आपको स्पॉट से पैसा विड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि इस फ्यूचर से विड्रॉ डायरेक्टली नहीं होता है। ये क्या दिख के आता है यहाँ पे कि फ्यूचर का विड्रॉ हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? पहले तो आप मुझे सवाल का जवाब ही दे दो। यूजर 909397, आप विड्रॉ फ्यूचर का पैसा करना चाहते हो कि स्पॉट का पैसा करना चाहते हो? ये मुझे बता दो, तो फिर उसी हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। क्योंकि हम फ्यूचर का पैसा डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। ठीक है, उसके लिए आपको एक प्रोसेस करनी पड़ती है। तो अगर आपको फ्यूचर का पैसा निकालना है तो प्लीज मुझे बताइए कि आपको फ्यूचर का पैसा निकालना है, मैं उसका प्रोसेस बताता हूं आपको। अगर सिर्फ स्पॉट का पैसा निकालना है तो स्पॉट का बहुत सिंपल सा है, सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक कर लो।
तो आपका पैसा निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। बट फ्यूचर के लिए अलग प्रोसेस है, फ्यूचर का डायरेक्ट नहीं निकलता। देखो ये लिख के आता है, विड्रॉ फंक्शन विल बी अवेलेबल। फ्यूचर में है, शायद तुम भी तभी पूछ रहे हो, ठीक है। तो फ्यूचर का प्रोसेस कैसे करता है, अब ये बाजू में यहाँ पे ट्रांसफर करके दिख रहा है क्या? सबसे पहले हम इस ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। पहला स्टेप क्या है, ट्रांसफर पे क्लिक किया। अब एक चीज मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे स्पॉट में कोई पैसा है क्या? मेरे स्पॉट में 0 रुपये है, ठीक है। अभी सारा पैसा मेरा कहां पे, फ्यूचर में पड़ा हुआ है। अब सबसे पहली स्टेप क्या करूंगा, मैं ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा। अब ट्रांसफर क्या, फ्रॉम फ्यूचर टू स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे स्पॉट टू फ्यूचर नहीं होना चाहिए, फ्यूचर से हम स्पॉट में पैसा डाल रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम फ्यूचर टू स्पॉट यूएसडीटी। अब यहाँ पे को जितना भी लिखना है, अभी मैं फिलहाल के लिए सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं 100 यूएसडीटी भेज रहा हूं, कहां पे, स्पॉट के यहाँ पे मैंने कंफर्म पे क्लिक कर दिया। मैंने जैसे कंफर्म पे क्लिक हो गया, यहाँ पे आता है ट्रांसफर सक्सेसफुल, 100 यूएसडी हो गए। इसको मैं लेटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद में बैक जाके मैं एक बार स्पॉट का बैलेंस देख लिया। अभी स्पॉट मेरे 100 रुपए आ गए, ठीक है। ये मेरे स्पॉट में 100 रुपए आ गए। 100 रुपए आने के बाद में फिर अपन स्पॉट से फिर ये मैंने विड्रॉल का प्रोसेस पे क्लिक किया, क्रिप्टो विड्रॉल। एंड फिर ये अपना यूएसडीटी मेरे पास अवेलेबल है। अपना जो भी आपका वॉलेट एड्रेस होगा, आप वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करो। आपके पास यहाँ पे 100 है, मिनिमम 5 है, ठीक है, मिनिमम 5 है। 5 के नीचे मतलब 4, 3, 2, 1 ये डॉलर नहीं जाते। आप $5, $4, $3 ये नहीं निकाल सकते मार्केट से, ठीक है। आप 5, 6 उसके ऊपर निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 5 मतलब मिनिमम 5 है। तो आप लिख दो जो भी आपको लिखना है, मतलब मैं अभी अगर 6 लिख दूं तो 6 हो जाता है, ठीक है। मेरे पास 100 है वैसे करने के लिए। यहाँ पे मैंने बैलेंस कॉपी पेस्ट कर दिया। जैसे बैलेंस कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको फी फी वगैरह तो पता ही होगी कि $1 की फी लगती है हमारे यहाँ पे। जब भी आप विड्रॉ करते हो तो $1 की फी लगती है। मतलब अगर समझो 5 आप विड्रॉ, मतलब मैंने 6 विड्रॉ किया है, तो अमाउंट मुझे कितना मिलेगा, 5, $1 हो जाएगा ट्रांसफर फी जो चले जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये है विड्रॉ का प्रोसेस, ठीक है। समझ में आ गई विड्रॉ की प्रोसेस? इजी है। सिर्फ फ्यूचर में अगर पैसा है तो यहाँ पे ट्रांसफर पे क्लिक करते जाओ। ये ट्रांसफर पे क्लिक किया, ये बाकी फ्यूचर टू स्पॉट, यहाँ पे अमाउंट लिख देना जो भी आपका अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है। बैंक में नहीं होगा आई थिंक, बैंक में भी हो सकता है, आप ऑप्शन चेक करिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ क्रिप्टो वॉलेट का एड्रेस है, ठीक है। वो बैंक टू बैंक भी हो सकता है, आप एक बार ट्राई करके चेक करिए। क्योंकि ये जो करेंसी है डॉलर वाली यूएसडीटी, ये एक डिजिटल करेंसी है, ये डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर नहीं हो सकती। ये आपको कन्वर्ट करके फिर वो आपके आईएनआर में ट्रांसफर होता है। तो आप एक ट्रस्ट वॉलेट बना लो मेरे ख्याल से, तो सबसे पहले फिर वो वॉलेट से आप एक्सचेंज करके आईएनआर में भी कर सकते हो, वो भी इजी है। वॉलेट कैसे क्रिएट करें ब्रो? वॉलेट आप देखो, मैं आपको वॉलेट दिखाता हूँ। ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जा सकते हो एंड यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप ट्रस्ट वॉलेट। ये क्रिप्टो वॉलेट है, ठीक है, जिसमें आप बिटकॉइन, इथेरियम ये सब चीजें ले सकते हो। ये ट्रस्ट वॉलेट को यहाँ पे डाउनलोड कर लिए, बिटकॉइन वॉलेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद में इसको ओपन करेंगे हम लोग। डाउनलोड करने के बाद ये ओपन किया, अभी यहाँ पे ये पूरा दिख के आता है। ये सेंड करना है तो उसमें सेंड पे क्लिक कर लो, फंड करना है तो फंड पे, और रिसीव चाहिए तो रिसीव का भी एक ऑप्शन है। ये मेन वॉलेट है, मेरा मेन वॉलेट। देख लो यहाँ पे ये ऑल ऑप्शन भी आते हैं, एक्सचेंज से करना है, क्रिप्टो वॉलेट से करना है, P2P से करना है, ऑल पेमेंट मेथड यहाँ पे सारे अवेलेबल रहते हैं। आप गूगल पे से भी आप पे करके कर सकते हो, फंड करना है तो वॉलेट जैसी हमारे यहाँ पे होता है, आप यहाँ पे आईएनआर में बेचते हो, पर वो कन्वर्ट होके आपको डॉलर में मिल जाता है, सेम यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पे भी वही चीज है। रिसीव का भी एक था यार, रिसीव का आ गया। यूएसडी करना है मुझे। अबे मैं यहाँ पे यूएसडीटी कर देता हूँ। ये यूएसडीटी करना है मुझे। बीएनबी स्मार्ट, ये पिक करना जरूर भूलना मत, ठीक है? ये सारे जो है ना, ये ब्लॉकचेन है ये। अब मैं जो भी ब्लॉकचेन यूज करता हूँ मेरे इस पे, फॉर एग्जांपल अभी कहाँ गया मेरा ये वॉलेट, ये रहा यहाँ पे। जब भी मैं इस पे विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्रिप्टो विड्रॉ, अभी ये मैं कौन सा नेटवर्क यूज कर रहा हूँ ये जानना बहुत जरूरी है। जो भी मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ वही नेटवर्क का आपको वहां पे यूएसडी क्लिक करना है, ठीक है? इथेरियम का है तो इथेरियम क्लिक करेंगे वॉलेट के अंदर। ऑप्टिमिज्म है तो ऑप्टिमिज्म का करेंगे, जैसे अभी मैंने क्या इसका कर रखा है, ऑप्टिमिज्म का। तो मुझे ये वॉलेट एड्रेस पे यहाँ पे, तो ये मुझे वॉलेट एड्रेस पे यहाँ पे ऑप्टिमिज्म ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? ऑप्टिमिज्म के इस पे ही मैं ब्लॉकचेन यूज करूंगा, तो वो दो ब्लॉकचेन अलग अलग हो जाएगी। सेम ब्लॉकचेन का हम ढूंढेंगे यहाँ पे। अब ऑप्टिमिज्म मिल जाए तो बहुत अच्छा है। बी एन बी सोलाना सोलाना सोलाना, यहाँ पे मैं सर्च ही कर लेता हूँ। मुझे चाहिए ऑप्टिमिज्म का, ऑप्ट 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 ऑप्ट। यहाँ पे ऑप्टिमिज्म नहीं है तो मुझे ब्लॉकचेन चेंज करना पड़ेगा अपना वहां से। तो मैं यहाँ से अपना अगर ब्लॉकचेन चेंज करता हूँ, ये ऑप्टिमिज्म वहां पे नहीं है, ठीक है? तो चलो कर लेते हैं, बीएनबी स्मार्ट कर लेते हैं, बीएनबी स्मार्ट चेन यूज करता हूँ मैं। अब ये सेम चीज मुझे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे आया, यार कितने बार पासवर्ड डालूं। अब यहाँ पे आके ये बीएनबी स्मार्ट चेन होगा, यहाँ पे ओपी बीएनबी दिख रहा है, यहाँ पे ओपी बीएनबी, यहाँ पे अब मैंने क्लिक कर दिया। अब ये रिसीव पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल से यहाँ पे कॉपी करूंगा इसे, ये मेरा वॉलेट एड्रेस हो गया। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट का करूंगा मैं, पेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे, ये देख रहे हो लॉन्ग प्रेस वॉलेट एड्रेस। बीएनबी, बीएनबी का, बीएनबी, अभी ये कर दिया मैंने पेस्ट यहाँ पे, बीएनबी सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो भी, अगर मेरे को 10 करना है, 20 करना है, ये तभी मैं फिलहाल के लिए 10 करता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं कंफर्म करता हूँ, एक यूएसडीटी मेरा कट जाएगा और 9 यूएसडीटी मेरे वो वॉलेट में ऐड हो जाएगी, ठीक है? ये ऐसे आप अपना विड्रॉ कर सकते हो। बस एक चीज जरूर मेंशन रखना कि जो भी नेटवर्क यूज करते हो, अभी नेटवर्क क्या होता है, ब्लॉकचेन का सिस्टम होता है। जो भी आप ब्लॉकचेन का सिस्टम यूज करते हो वही सिस्टम आपको वहां पे रिसीव करना है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग ब्लॉकचेन सिस्टम्स है, इथेरियम का है, आर्बिट्रम का है, बेस का है, क्रोनोस चेन है, बीएनबी है, मेन नेट है, ये सारे, ये ट्रॉन वगैरह, ये बीएनबी स्मार्ट चेन, ये सब चीजें आपको मेक श्योर करके, या भी बीएनबी का स्मार्ट चेन है, बीएनबी के स्मार्ट चेन पे क्लिक करके, ये जो भी है यहाँ पे मैंने सीधा कॉपी कर लिया अपना एड्रेस। एंड फिर ये बीएनबी का स्मार्ट चेन मैं कहाँ से कंपेयर करूंगा, कि ये देखो बीएनबी स्मार्ट चेन दिख रहा है, इस पे क्लिक कर लिया। एंड यहाँ पे वो लॉन्ग प्रेस करना है मुझे, ठीक है? ये मेरा एड्रेस यहाँ पे पेस्ट हो गया। जैसे ही पेस्ट हो गया, अमाउंट मैंने डाला, जो भी मैंने XYZ अमाउंट डाला, 50 100 200 जितना भी मैं विड्रॉ करना चाहता हूँ, कंफर्म कर लूंगा एंड वो मेरा एड्रेस वहां पे वो चले जाएगा। समझ में आ गई बात? सिंपल है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। क्रिप्टो वॉलेट आप डाउनलोड कर लो एक बार, ठीक है? और कोई डाउट है आपको वैसे इसके अलावा? इसके अलावा आपको कोई डाउट? क्रिप्टो वॉलेट आप
यूजर 909397। इस चीज के अलावा आपको कोई और डाउट है? यस ब्रो, क्या बोलिए जी, आपका डाउट बताइए। ठीक है, और कोई डाउट है आपको वैसे इसके अलावा? इसके अलावा आपको कोई डाउट? कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो, प्लीज आप मुझे पूछ सकते हो इजीली। अगर आप, क्योंकि देखो मैं लाइव स्ट्रीम पे रहता हूँ तो मुझे टॉपिक कंटेंट ये सब चीजें भी सॉल्व करनी पड़ती है। तो मैं चाहूंगा यूजर 909397, ये मेरा ना, यहाँ पे मोर का ऑप्शन क्लिक करके मेरा टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं ऑल टाइम अवेलेबल रहता हूँ। कभी भी कोई भी डाउट हो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्ड सब कुछ भेज सके आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम पे चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपकी अगर आगे में जाके कोई भी मदद चाहिए मेरे से, फ्यूचर का ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, आती है कोई ना कोई प्रॉब्लम जिंदगी में आती रहती है, उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत जरूरी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे तो 4 घंटे ही रहता हूँ। 4 घंटे के अलावा भी अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। यहाँ पे मैं 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। जब भी आपको जो भी मदद चाहिए हो, यहाँ पे प्लीज मुझसे मांग लिया करो। ठीक है, वेलकम यूजर 440329, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय लाइव स्ट्रीम। ओके, अभी मैं, ओके ब्रो, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, दो रिवॉर्ड है मेरे पास आपके लिए। एक है न्यू यूजर का गिफ्ट। यहाँ पे अगर कोई भी मेरे लाइव स्ट्रीम में नया यूजर है जिसने आज तक पहले कभी डिपॉजिट नहीं किया, विड्रॉ नहीं किया, ट्रेड नहीं लिया, उसके लिए एक डोज कॉइन में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। एक डोज कॉइन पूरा कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी एक और गिफ्ट है जो बाकी यूजर के लिए, ये तो सिर्फ नए यूजर के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ नए यूजर के लिए। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए तो वो है डिपॉजिट। अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे, ये देख लो, ये यहाँ पे लाइव स्ट्रीम का बटन दिख रहा है डिपॉजिट का। यस, अगर ये लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट पे आप क्लिक करके 20 USDT, कितना, 20 USDT डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना मिलता है? 200 USDT फ्री। अगर आपको झूठ लग रहा हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा भी सकता हूँ। ये मेरा गिफ्ट सेक्शन है। ये क्या दिख रहा है यहाँ पे? डिपॉजिट रिवॉर्ड, डिपॉजिट 20 एंड गेट 200 फ्यूचर क्रेडिट, दिख रहा है? डिपॉजिट टू क्लेम 200 फ्यूचर क्रेडिट। ये यहाँ पे उन सब लोगों के नाम आ जाते हैं जिन्होंने लिया है ऑलरेडी। देखो, ये यूजर क्लेम्ड ऑलरेडी 200 फ्यूचर क्रेडिट, ये यूजर ने भी क्लेम कर लिया 200 फ्यूचर क्रेडिट। ये बाकी बाकी लोगों को इथेरियम सोलाना भी मिल रहा है। वो कहाँ से मिल रहा है? वो ये वाले ट्रेड से मिल रहा है। अब ये ट्रेड थोड़ा महंगा है, इसलिए मैं इतने लोगों को बताता नहीं हूँ ये चीज। जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं वो खुद जाके देख लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको $1930 का इन्वेस्ट करना है इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, एक्सआरपी, स्पॉट कॉइन मिलने के लिए, जो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। तो अगर आपको सिंपली सिंपली सिर्फ ये छोटा डिपॉजिट है 20 USDT, कोई बड़ा डिपॉजिट नहीं है। अगर आपको 20 USDT डिपॉजिट करके 10 गुने ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो मिलेगा आपको 200 USDT। 200, 20 करके 200 मिल रहा है। अगर आप ये करना चाहते हो तो प्लीज मेरे लाइव स्ट्रीम के यहाँ पे क्लिक करना। ये वाला लाइव स्ट्रीम का डिपॉजिट बटन दिख रहे हो, इस डिपॉजिट बटन पे क्लिक करके आज 20 USDT इस पे डिपॉजिट करो एंड पाओ 200 USDT फ्री ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, इथेरियम या बिटकॉइन दोनों में से आपकी जो चॉइस होती है, आप उसमें वो ट्रेड कर सकते हो बड़ी आराम से। ठीक है, क्लिक करके आज 20 USDT इस पे डिपॉजिट करो एंड पाओ। और कोई तकलीफ और कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अभी फिलहाल में ये दो रिवॉर्ड है जो सारे लोगों के लिए है, तो प्लीज उसे लेना ना भूलिए, क्योंकि ऐसे ही मौके आते हैं, मौके चले जाते हैं। कोई यूज नहीं करता है वो मौके, फिर रिग्रेट करते हैं, यार काश मेरे पास बड़ा इन्वेस्टमेंट होता। जब तुम्हें फ्री में बड़ा इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं तो तुम अभी क्यों नहीं ले रहे हो? ये फिर वो सवाल आ जाता है। तो अगर अभी आपको अगर फ्री में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है 200 USDT फ्री में, सिर्फ 20 USDT का डिपॉजिट करके, तो ये वाला मौका अपने हाथ से ना गवाइए एंड आज ही डिपॉजिट कीजिए लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट पे। ठीक है, कल भी एक बंदे को ये डोज कॉइन चाहिए था,
पर उसने डिपॉजिट कहीं और से किया, उसने डिपॉजिट, ये देख लो यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एक होम पेज पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे ये यहाँ पे एक डिपॉजिट का ऑप्शन है, कोई कोई लोग यहाँ से डिपॉजिट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से डिपॉजिट करने पे तुमको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कंडीशन बताता हूँ कि मेरे लाइव स्ट्रीम के इससे ही डिपॉजिट करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से। एक होम पेज पे भी ऑप्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पे कल उसने वो वहां पे मेन अका मतलब होम पे से डिपॉजिट कर लिया था, नहीं मिला उसे। तो ये यहाँ से डिपॉजिट करने पे तुमको कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कंडीशन बताता हूँ कि मेरे लाइव स्ट्रीम के इससे ही डिपॉजिट करना है। तो हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बता रहा था आप सब लोगों को, कि चार्ट पैटर्न कैसे ढूंढते हैं, कैसे पकड़ते हैं, और वो कैसे दिखते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बता रहा था आप सब लोगों को, कि चार्ट पैटर्न कैसे ढूंढते हैं, कैसे पकड़ते हैं, और वो कैसे दिखते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। तो हम आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बता रहा था आप सब लोगों को, कि चार्ट पैटर्न कैसे ढूंढते हैं, कैसे पकड़ते हैं, और वो कैसे दिखते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। वेलकम तारुक नाथ। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं यार आज लाइव स्ट्रीम पे, एक चमन आया था भाई, यू वोंट बिलीव, यूजर 909397, एक बंदा था अभी लाइव स्ट्रीम पे आया था, उसका असली नाम चमन है, चमन नाम रखा है उसके घर वालों ने उसका, चमन। तारुक नाथ, कमाल है यार, मतलब कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, कैन यू बिलीव इट, एक चमन आया था भाई, यू वोंट बिलीव, यूजर 90, मैं शौक, मेरे को लगा कि मजाक कर रहा है, ऐसी मजाक में यूजर नेम रख दिया उसने। उसके थोड़े कमेंट चेक करो, मैं देखो कोई कमेंट दिखा हो गया यार, आपको कमेंट नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपके पहले आ चुका था और आपके पहले कमेंट किया था उसने, चमन नाम था यार उसका। मुझे बड़ा दुख हुआ उसके लिए, थोड़ा में हंसी आई पर फिर दुख भी हुआ कि यार चमन नाम है यार तेरा। उसके थोड़े कमेंट चेक करो, मैं देखो कोई कमेंट दिखा हो गया यार, आप राइजिंग वेज पैटर्न पहले आ चुका था और आपके पहले कमेंट किया था उसने, ये एक तरीके का ना ट्रायंगल पैटर्न है, ठीक है। तो इससे हम समझते हैं पहले कि ये एक तरीके का ट्रायंगल पैटर्न है, राइजिंग वेज पैटर्न। ये दिखता कैसा है, बनता कैसा है, ये सब चीजें मैं बताता हूँ। इसके पहले तो मैं यहाँ पे ना वो ये चीज बना देता हूँ कि ये बेरिश है कि बुलिश है, ये एक बेरिश। तो इससे हम समझते हैं पहले कि ये एक तरीके का ट्रायंगल पैटर्न है, राइजिंग वेज पैटर्न। बेरिश पैटर्न वो होते हैं जो मार्केट गिरा देते हैं, मतलब मार्केट गिरने से पहले अगर आपको वो वाली ड्राइंग दिख जाती है मार्केट के अंदर, हम पैटर्न बोलते हैं, मैं पैटर्न बोलता हूँ, मार्केट के लैंग्वेज के हिसाब से उसे हम पैटर्न बोलते हैं। बट अगर आपको बहुत सरल भाषा में समझना है कि उसे क्या बोलते, तो उसे हम तुम ड्राइंग ही बोल सकते हो। एक ड्राइंग है, अगर वो वैसी की वैसी ड्राइंग मार्केट में दिख गई, तो फिर समझ लेना कि यार ये मार्केट अभी यहाँ से गिर जाएगी करके, ठीक है। तो उसके पहले ही आपको ट्रेड कैसा लेना है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और टारगेट कितना मिलेगा, ये सारी चीज वो चार्ट पैटर्न ही बता देता है आप, ठीक है। तो मैं पहले वो ड्रॉ कर लेता हूँ कि वो दिखता कैसा है, फिर उसके बारे में उसके बाद एक एक करके सारी चीजें हम समझेंगे उसकी, ठीक है। पहले ही आपको ट्रेड कैसा लेना है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और टारगेट कितना मिलेगा, ये सारी चीज वो चार्ट पैटर्न ही बता देता है आप, ठीक है। तो मैं पहले वो ड्रॉ कर लेता हूँ कि वो दिखता कैसा है, फिर उसके बारे में उसके बाद एक एक करके सारी चीजें हम समझेंगे उसकी, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड फिर अभी मिल गया मुझे ब्रेक। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा दिखने में आपको लग रहा होगा कि यार इसमें ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है, मैं ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा दिखने में आपको लग रहा होगा कि यार इसमें ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है, मैं ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ।
और छोटा बना देता हूँ। ये होता है राइजिंग वेज पैटर्न। ठीक है, इसे हम बोलते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। ये ऐसा कुछ दिखता है। अब राइजिंग वेज पैटर्न समझते कैसा है, पहले हम जानते से कंडीशन, ये क्या करता है, ये कैसे बनता है, ये कहाँ बनता है, ये सब चीजें। सबसे पहले तो ये राइजिंग वेज बस एक चार्ट पैटर्न है, एक ड्राइंग है जो आपको मार्केट के अंदर ढूंढनी है। ठीक है, ये ढूंढ के आप हमेशा जब भी आपको ब्रेकआउट मिले आप एंट्री ले सकते हो शॉर्ट की। अभी कैसी लेनी है, ये पैटर्न क्यों बनता है, ये पैटर्न कैसे बनता है, ये सब चीजें जानते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट में क्या होना चाहिए, एक एक्टिव बाइंग होनी चाहिए। मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए, यहां से यहां तक क्या हो रहा है, एक्टिव बाइंग हो रही है। मतलब क्या होता है एक्टिव बाइंग का, मतलब क्या होता है कि मतलब ये टाइम पे यहाँ पे इस जगह पे सारे मार्केट में सबके सब बायर्स है बस। सबसे पहले तो यहाँ पे मार्केट में क्या होना चाहिए, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ठीक है, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे सारे के सारे बंदे बस बायर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं बस। समझ में आ गई बात कि यहाँ पे ये छोटे प्राइस में मार्केट ने बायर से मार्केट को देखा कि ये बहुत ही नीचे है मार्केट, मतलब ये बहुत ही कम प्राइस में, चीप प्राइस में मिल गया। अभी अगर यहाँ पे हम बहुत अच्छा तगड़ा बाय करते हैं तो मार्केट अच्छी खासी ऊपर चली जाएगी और हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये कौन करता है, एक्टिव बायर्स करता है। ठीक है, अभी एक्टिव बायर्स और एक्टिव सेलर्स तो बहुत जगह दिखेगी, बट एक चीज नोटिस की है क्या कि जब भी मार्केट नीचे प्राइस से हल्का ऊपर जाती है उसके प्राइस में थोड़ा नीचे गिरती है। क्यों गिरती है, कभी सोचा है उस बारे में कि गिरती क्यों है यार? एक तो तुम्हारे पास बायर है, तुम एक्टिव बायर्स हो, तुम यहां से मार्केट उठा चुके हो, तुम्हारा मार्केट यहां पहुंच चुका है, तुम यहां पहुंचाने के बाद में गिरा क्यों देते हो? कभी सोचा इस बारे में? मैं बताता हूँ क्यों। अभी समझ लो कि तुम खेल रहे हो टग ऑफ वॉर। ठीक है, एक यहां से बंदे पड़े हुए बायर्स रस्सी खींच रहे और यहाँ पे सेलर लोग हैं जो रस्सी खींच रहे। अब ऐसा है क्या कि कांस्टेंट स्ट्रेंथ रहेगी लोगों की, मतलब बायर की भी स्ट्रेंथ सेम है और सेलर की भी स्ट्रेंथ सेम है, ऐसा होगा क्या? नहीं। कभी कभी ऐसा होगा कि यार यहाँ का पल्ला थोड़ा धीरे थोड़ा हल्का हो जाएगा तो यहाँ पे सेलर खींच लेंगे थोड़ा सा, या फिर कभी कभी सेलर का थोड़ा सा जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा तो बायर खींच लेंगे थोड़ा सा। अब ये स्ट्रेंथ ही है जो ये करती है। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसा, अभी यहां से लोगों ने बाय किया, समझ के चलते यहाँ पे हमने कम से कम 10 लोगों ने बाय किया। ठीक है, बाय कर लिया। अब ये 10 लोग का बाय यहां हो चुका है, थोड़ा मार्केट यहां तक उठ गया। अब जब तक नए 10 लोग आते फिर यहां उठाएंगे, फिर और नए 10 लोग आ गए फिर यहां उठाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां। अब एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि यहां वाला जो बंदा है जिसने यहाँ पे, एक सेकेंड, अब ये 10 लोग का बाय यहाँ हो, जो यहाँ पे जिसने बाय किया है वो यहाँ पे सेल करेगा ही करेगा क्योंकि उसका प्रॉफिट मिल गया। अभी सबके सब लोग तो सेम नहीं है कि यार मुझे यहां से सब लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि 10 के 10 लोगों ने बोला कि जब तक मार्केट मुझे 5% का प्रॉफिट नहीं देगा मैं ट्रेड नहीं हटाऊंगा, ऐसा तो है नहीं। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं होती है, सबका अपना अपना सेटिस्फैक्शन होता है। किसी को 1% में सेटिस्फाइड हो जाता है, किसी को 2 में हो जाता है, किसी को 3 में हो जाता है। ये तो उसकी मर्जी है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ये अपनी मर्जी के हिसाब से वो कभी भी सेल ले लेता है। ठीक है, तो होता कैसे, स्ट्रेंथ कम कैसे होती है, एक तो जिन लोगों ने शुरुआत में बाय किया था वो धीरे से यहाँ पे अपना प्रॉफिट लेके निकलने को देखते हैं। अब एक बायर अपना प्रॉफिट कैसे लेगा, बेच के। उसने खरीदा कितने में, यहाँ पे समझ के चलते हैं 100 रुपए में खरीदा, अब वो बेच कितने में रहा है, 1000 में बेच रहा है। प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है उसको, हो रहा है। तो यहाँ पे जो बायर होता है वो सेलर बन जाता है। तो यहां से मार्केट पहले गिरना चालू करता है। अभी गिरता सिर्फ उसी एक की वजह से नहीं है, स्ट्रेंथ कम दिखती है। जहां पे भी मार्केट को उसकी स्ट्रेंथ कम दिखी, दूसरे पट्टे दूसरे लोग अपना बायर, अपना जो भी ये होता है क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेंथ होता है, वो अपना डोमिनेशन दिखाने का ट्राई करते हैं। कि बायर ने दिखा दिया, बायर थोड़ा हल्का कहीं जगह कमजोर हो गया, सेलर एकदम से घुस जाता है कि अब मैं दिखाता हूं मेरी पावर, मैं कितना गिरा सकता हूं मार्केट। तो ये होता है शुरुआत।
अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही मतलब इसे हल्का सा थोड़ा लूज किया तो ये पूरा ही खींच लेगा और जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हल्का कंपटीशन बनता है, नहीं बनता है मार्केट में। कमजोर हो गया, अब ये कंपटीशन में समझाता हूं, ठीक है कि अब मैं दिखाता हूं मेरी पावर, मैं कितना गिरा सकता हूं मार्केट। तो ये होता है शुरुआत। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम ही मतलब इसे हल्का सा थोड़ा लूज किया तो ये पूरा ही खींच लेगा और जीत जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हल्का कंपटीशन बनता है, नहीं बनता है मार्केट में। अब ये कंपटीशन में समझाता हूं, ठीक है कि अब मैं दिखाता हूं मेरी पावर, मैं कितना गिरा सकता हूं मार्केट। तो ये होता है शुरुआत। ठीक है, तो अभी मार्केट में यहां पे क्या बना सबसे पहले, एक पहला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है कि मार्केट अभी कमजोर हो रहा है, स्ट्रेंथ जा रही है। इसके ऊपर R1 रेजिस्टेंस मतलब सीधा सीधा ये होता है कि यार इसके ऊपर मार्केट उसे उस प्राइस को उसके ऊपर ले जा नहीं पाया। यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस है, मार्केट यहां से उठी 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 उठी, इसको यहां से ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला, ये रुक गई यहाँ पे और फिर यहां से वापस नीचे गिरना चालू की। तो ये प्राइस क्या हो गया मेरा रेजिस्टेंस, कि ये वाले प्राइस पे आके मार्केट गिर गई, उसे हम बोलते हैं R1 जो होता है रेजिस्टेंस है। मार्केट यहां से उठी 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 उठी, इसको ठीक है, इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रुक गई यहाँ पे। अब दूसरी चीज, ये गिरी, क्यों गिरी, दो वजह से। एक, अभी मैं हर जगह लिखते बैठूंगा तो फिर वो जगह कम पड़ जाएगी यार। ये R1 से मार्केट क्यों गिरती है मैं वर्बली बता देता हूं। यहाँ के जो बायर है यहाँ आके वो सेलर बन जाते हैं, और प्लस अर्ली सेलर अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखती है एक चीज कि अभी मार्केट में बायर का स्ट्रेंथ नहीं है। तो ये वो वाला पॉइंट है जहां पे हम अभी मार्केट को गिरा सकते हैं अच्छे खासे सपोर्ट मिलने के बाद, सपोर्ट मिलने के बाद, ठीक है। तो ये R1 से S1 तक का सफर, ये S1 है मेरा। R1 से S1 तक का सफर क्यों हुआ, पहले के बायर सेलर बन गए, उन्होंने एग्जिट ले लिया अपना प्रॉफिट लेके, और दूसरे जो थे, ठीक है, तो ये R1 से S1 तक का सफर, और नए वाले सेलर जिनको देखा कि भाई अभी सेलर, अभी बायर की जो स्ट्रेंथ है वो हल्की सी कम हो गई है, तो उनका फायदा उठा के वो भी घुस गए सेल करने के, दोनों चीज की वजह से मार्केट थोड़ी हल्की सी गिर गई। अब ये हल्की गिरना ये बहुत ही जायज है, बहुत जायज है। क्यों जायज है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है, क्या ट्रेंड है मार्केट में, मार्केट का ट्रेंड है अप ट्रेंड। ये ऐसा घूमता है मार्केट, ये अप ट्रेंड इसको बोलते हैं। ये बनता हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हाई हायर लो, ऐसा जाता है मार्केट पर। तो ये चीज तो होना तो बड़ी कॉमन सी बात है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे S1 पे वहां से वापस मार्केट ऊपर चली जाती, क्यों चली जाती है, क्यों मार्केट S1 से फिर ऊपर चली गई, क्यों और कैसे। अब जैसे मैंने बताया कि मार्केट अप ट्रेंड में है, हायर हाई बनाया उसने, ये उसका हायर हाई हो गया, ये उसने लोअर बनाया, ये उसका हायर लो हो गया। अब हायर लो क्या होता है, हायर लो पे हमेशा एक चीज नोटिस करना कि बाकी की जो बायर जो यहां नहीं आ पाए वो यहां एंट्री लेने का ट्राई करते हैं, एक रिट्रेसमेंट को सोचते हैं कि यार ये मूवमेंट ऊपर जा रहा है ना, जाने देते हैं, एक हल्का सा रिट्रेसमेंट, हल्की सी मार्केट नीचे गिरेगी मैं तब एंट्री लेता हूं। अब ये गिर गई हल्की सी मार्केट नीचे, अब उन्होंने यहाँ पे ले लिया है एंट्री। वेलकम यूजर 107351। अगर आप नए यूजर हो, इफ यू आर अ न्यू यूजर, आई हैव वन डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री फॉर यू। आपके लिए एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री है मेरे पास। अगर आप नए यूजर हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं कि आप नए यूजर हो, क्योंकि हर नए यूजर का गिफ्ट है ये लेना ना भूले। बहुत से नए यूजर भूल जाते हैं कि उनके पास एक डोज कॉइन फ्री में पड़ा हुआ है और वो कभी ले नहीं पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है। तो अगर आप नए यूजर हो तो ये आपके लिए एक डोज कॉइन फ्री में मेरे पास है। बस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आप नए यूजर हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। समझ में आ गई बात, इजी। उसके अलावा अगर आप नए यूजर नहीं भी हो, ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको खाली हाथ भेजूंगा। अच्छा लगता है कोई मेहमान आपके घर में आते खाली हाथ भेजते हो क्या उसे, नहीं भेजते हो। तो हम क्या करें, मैं आपके लिए भी एक दूसरा ऑफर लेके, अगर आप नए यूजर नहीं हो तो आपके लिए दूसरा ऑफर है, जो है अगर आप 20 USDT
मेरे लाइव स्ट्रीम के इसमें डिपॉजिट करते हो, लाइव स्ट्रीम के थ्रू डिपॉजिट करते हो, थ्रू बोलना जरूरी है। सबको क्या लगता है कि मैं पैसे खाने बैठा हूं यहाँ पे, मेरे पास नहीं आते आपके पैसे, ये आपका पैसा आपके अकाउंट में जाता है, मेरे अकाउंट में नहीं आता ये पैसे। तो अगर आप लाइव स्ट्रीम के थ्रू डिपॉजिट करते हो, इसका हाँ नया यूजर है, गिव मी सर प्लीज आईडी चेक करके देखो, डिपॉजिट करते हो, थ्रू बोलना जरूरी है। सबको क्या लगता है ठीक है, नहीं इतना भरोसा है यार, ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपने बोल दिया मैं भरोसा कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा वेरिफिकेशन दूसरी जगह पे होता है। ठीक है, अभी जैसे आप नए यूजर हो, मेरे को आईडी चेक करने की जरूरत नहीं है। उसमें क्या है, सबसे पहले तो आपने अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, तो ये एक डोज कॉइन मिलने के लिए आपको अकाउंट में पहला डिपॉजिट करना है। ठीक है, अगर आप पहला डिपॉजिट करते हो, लाइव स्ट्रीम के थ्रू आप पहला डिपॉजिट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, एक डोज कॉइन फ्री। इफ यू आर अ न्यू यूजर, यूजर 70790038 plus user 330457, if anybody of you are or is a new user, then make sure to do the first live stream deposit and get one Dogecoin completely from free of cost from us. Yeah, you can see over here, new user gift. This is a new user gift, one Dogecoin for everybody. Yes, new user gift, one Dogecoin free. So if you are a new user and you want that one Dogecoin, what you need to do is make sure that you are doing the first live stream deposit via live stream. It is very important that your live stream deposit should happen via live stream. So if you are a new user and you want that one Dogecoin, what you need to do is make sure that you are doing the first live stream deposit. Make sure to understand that you have to do what? Live stream deposit, first live stream deposit, all the new user, and then you will be receiving what? One Dogecoin completely for free of cost from my side. From my side you will be receiving that thing. Got it? Simple, very easy. You just need what? One Dogecoin, first deposit in the live stream. Just click on the first deposit from the live stream and complete all the process. Crypto deposit, USDT, then optimism, pick your blockchain, blah blah, save address, and just copy this address, put it in the send of your wallet or something, scan it, and then you will can do your first crypto deposit. Got it? From the live stream and complete all the process. Easily understandable. For getting one Dogecoin, the only thing which you need to do is first deposit inside the market. That's it. Of your wallet or something, scan it, and then you will can do your first crypto deposit. Got it? Okay. Coming back to our things. Easily understandable. For getting one Dogecoin, the only thing which you need to do is first deposit inside the market. That's it. Okay, coming back to our things.
Okay. So I've written it for all people. Existing user give deposit 20 USDT and get 200 USDT free. New user gift 1 Dogecoin free. Okay. Okay. So everybody will get to know it. For all people. Existing user give deposit 20 USDT and get 200 USDT free. New user gift 1 Dogecoin free. Okay. As we were discussing our pattern over here, first we what saw R1 resistance 1, the point from where the market could not go above, buyers became seller and early seller also enter in the market. After that support came because the people who couldn't enter over here enter at this point. As we discussed this one thing, that in a uptrend lot of people enter at after the retracement of higher low. Once a higher low is made, a lot of people will try to enter it because they know this one thing, that the market will go above and cross the previous higher high. In this situation as well, we can clearly see that previous higher high is crossed. Can you see the line? This is that line. A new R2 is made over here. A lot of people will try to enter it because they know this one. This is the new R2 over here. Go above and cross the previous higher high. In this situation as well, we can. This is the new R2, and in that R2, what do we need? R2 is higher than the R1. It is still telling us that the market is in an uptrend, not telling us that it is the market can go on a short sell. No. When do we get confirmed that it is in a short sell and we can have a short movement? I will explain you later. Okay. R1 came to S1. S1 support came, early buyer who couldn't enter over here. Plus the new buyers also enter. This is went above the R1. As you can see, I will when do we get confirmed that it is in a short sell and we can have a short movement? I will explain you later. Okay. R1 came to S1. S1 support came, early buyer who couldn't enter over here. Plus the new buyers also enter. This is went above. Okay, you can clearly see that R1 was above, sorry, R1 R2 was above the R1 length. Yes, that means what? That the higher high, new higher high is created. It tells us about one thing, that market is still in uptrend. Okay, from that R2, can you see the distance between R1 and R2 is not that big, very small. Tells us about the strength of the buyer is weak, not strong. Okay, after that situation, market came down, and this is an important thing which you should be noticing, that the support was taken early. Rather than taking support at a similar price, again it take the same support at what, and made higher low, because it is higher than this. If you take understanding, this is higher high, higher low, higher high, and higher low. So it is still telling us that market is an uptrend because it made an higher low. After market making a higher low, again people get confidence that it is gonna be a uptrend. But at this point, what should be done? If market is creating a higher low, the support was taken earlier, there should be buyers in a strong position entering, because it is an uptrend, not a downtrend. But we can clearly see, even though the support was taken before, which became our S2, support 2 was taken even before the market come to S1, justifying what? This is a new higher low in the market. So market is still in a uptrend. The sellers, sorry, the buyers are the dominating one, as we can see. But again from here it pushes the market up. Yes, we can see the market is above R2 as well. I will draw it over here. Yes. Can we see that R3, our new resistance, R3 is above R2, making this market as a uptrend market still. Still it's an uptrend market, but the one thing which we are not observing is that R1
R2 and R3, they are very close to each other. The whenever market makes an uptrend, it will be not this close. It will be little big because the strength of the buyer is good. But if it's becoming like this, then it justifies, even though market is an uptrend, but this is an early sign for us that market soon will go in a downtrend because the lack of the strength. The strength is lacking over there. That's the one reason why now the shift of a trend will come and market will go from uptrend to a downtrend. Got it? Because the lack of the strength. The strength is lacking over there. That's the one reason why now the shift of a trend will come and market will go from uptrend to a downtrend. Got it? After this thing, market came down. Rather than taking a support in the market, it broke the level. After S1 and S2 is created, we'll put a trend line on there. That's how I created this pattern. First, I saw R1, R2, R3. After watching R1, R2, R3, I saw S1 and S2. The time I see S1, S2, I will just make a trend line on both of them like this. And same I will do this for R1, R2, R3. So I know about the resistance point where they can take resistance, and I also know about the support point. As you can see, slowly as a triangle pattern suggests, it is becoming small. Small, what? The strength is becoming small. Okay, sometime, like I said, in the market, we are understanding it in the S1, S2. Two support are taken, and third at the third support, the market give you a breakout. Sometime in the market, there might be a situation where it can extend, S3 can become, and then R4, and after that, we can see a breakout after S3. Sometime we can see S3, S4, S and S5 will give you a breakout. Okay, so the support, how much support should be there? That is not mandatory. Breakout, if you see a breakout, that is what mandatory is. Okay, any support, let you have any support, doesn't matter whatever support it takes, really doesn't matter whatever support you take, S3 or you make S4 as well, or you make S5 as well, doesn't matter. If it is getting smaller and smaller, that gives us high chances that right now the trend can change. Sometime trend change from the S2 S3 itself. Sometime S3 will be made and S4 the trend will change. Okay, so it is not same. It can take from S3, it can take from S4, it can take from S5 as well. Welcome user 8182 welcome on the live stream. You can see there are two offers, two gifts for all of you people. If you are a new user, you get one Dogecoin free, but for that you need to tell me you are a new user. Okay, plus you have to make a first deposit. This is a first deposit gift. All the new user, if they make first deposit, आप इंडियन हो तो मैं हिंदी में समझाता हूँ. अगर आप नए यूजर हो, इसके पहले आपने डिपॉजिट ट्रेड ये सब चीजें कुछ नहीं लिया है, तो जब भी आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे, मतलब ये यहाँ पे डिपॉजिट का बटन देख पा रहे हो आप, जब इस पे क्लिक करके आप पहला डिपॉजिट करते हो, आपके फुल ये जीबिट पे आने के बाद, जब ये आपका पहला डिपॉजिट है, जब इस डिपॉजिट पे क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ इसी डिपॉजिट पे क्लिक करके आप अपना पहला डिपॉजिट करते हो, तो आपको मिलता है एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. ये मेरी तरफ से होता है, ये कंपनी का गिफ्ट नहीं है, ये यश पवार का गिफ्ट है. मेरा नाम यश है, मैं यहाँ पे लाइव स्ट्रीम होस्ट हूँ, एंड मैं सारे नए यूजर के लिए गिफ्ट रखता हूँ कि मतलब ऑब्वियसली उनको मोटिवेट करना जरूरी है. तो जो भी एक नए यूजर आते हैं, जो भी एक नए यूजर होता है, उन सब नए यूजर के लिए एक गिफ्ट है जो है एक डोज कॉइन फ्री में, पहले डिपॉजिट के ऊपर ही. ठीक है, जब तक आप पहला डिपॉजिट नहीं करते आपको डोज कॉइन नहीं मिलेगा, एंड वो डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ ये लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट से होना चाहिए.
क्योंकि कल ही एक बंदे ने लाइव स्ट्रीम का डिपॉजिट छोड़ के वो होम पेज के डिपॉजिट पे डिपॉजिट किया था, अपना पहला डिपॉजिट, एंड वो चाह रहा था कि वो उसके वो मिले, बट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट से नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट, ठीक है? तो लाइव स्ट्रीम का डिपॉजिट मेकिंग अ फर्स्ट, इफ यू आर welcome user 6009390, if you are a new user, make sure this understand one thing, that you have one Dogecoin free from my side, only for the new users. All the new users will have this reward. Okay, all the new users will have this reward. If you are the new user, you will get one Dogecoin completely for free of cost. The one thing which you should be doing is make your first deposit inside the live stream option. And for the existing user, deposit 20 USDT and get 200 USDT free. There are two new offers for all of you people. First offer, new user first one Dogecoin. If you deposit, sorry, not one Dogecoin. If you make your first deposit, then get one Dogecoin free. If you are existing user, you are not the new user, deposit 20 USDT and get 200 USDT free. Okay. All the deposit should happen from live stream deposit option only. Understood? Existing user, you are not the new user, deposit 20 USDT and get 200 USDT free. Okay. All the deposit should happen from live stream deposit option only. Understood? So, till now what we saw, market with an active buyers, R1, S1, first resistance taken by the market. Welcome user 363707. Welcome on the live stream. Thank you so much for coming down. Do not forget to observe this. New user gift, one Dogecoin free. Existing user gift, deposit 20 and get 200 USDT free. Okay, so these are the two gift for all of you people. Understand it. Now, as we are talking, do not forget to observe this new user gift. As we are talking about the market, in the rising wedge pattern, it's a reversal chart pattern, which will take active buyers which will make active buyers into active sellers. First thing, with an active buying, what is happening over here? With an active buying, we can clearly see that the market took its first resistance R1. In the rising wedge pattern, after that first retracement, market made S1. S1 continued to the R2. R2, we observe that it is above the R1, making it a new higher high. This is a new higher high, as we can observe in the market. After that thing, market fall down again with the sellers. Seller made the market fall down. And buyer made an early support, S2, which indicates us the second thing, which is that the market is having what? An uptrend. Why? Because we see higher high and we see higher low. Uptrend. It will again continue and make an R3. Again the same scenario. Confirmation of what? Uptrend. Now if you say, if you are getting a confirmation of uptrend, then why does this chart pattern changes this right changes this changes this uptrend into a downtrend? How? I will tell you how. First thing is, what happening is, after the market comes down, it can take support as well. Rising wedge pattern can have 2 to 3 support, and that is also fine. It can become like, it will come to this S3 will take support, another resistance will form R4, and then it can give a breakout. Breakout is important.
How much support will be taken before breakout? It is not important. It can take S3, S4 can give a breakout, or S4 can take a support and S5 can get a breakout, or S5 can take a support and S6 can give a breakout. Breakout is compulsory, but from where? That is not compulsory. Yes, user 107537. You said you are a new user and you wanted a one Dogecoin. Okay. But let me inform you this one thing कि ये जो रिवॉर्ड है एक डोज कॉइन फ्री में मिलता है फ्रॉम यश, मेरा नाम यश है, ठीक है। ये कब मिलता है? ऐसा ही नहीं कि आपने बस बोल दिया कि आप नए यूजर हो तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मिलने के लिए क्या करना है? आपको पहला डिपॉजिट, हमारा अकाउंट न्यू है भैया, थोड़ा डिपॉजिट कर दो, हम गरीब है आदमी, हम गरीब आदमी है भैया, मेरा नाम यश है, ठीक है। ये कब मिलता है? ऐसा ही नहीं कि आपने बस तो उसी के लिए मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे चैरिटी का पैसा नहीं है, आप पैसा मतलब ऐसा नहीं कि आप पैसा मांगो मैं पैसा दे दूंगा, ये वाली चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वो वाली चीज नहीं होगी, पहले तो मैं वो बता देता हूँ। दूसरी चीज, ये डोज कॉइन कैसे मिलता है? ये पहला डोज कॉइन कैसे मिलता है मार्केट में? जब आप पहला डिपॉजिट करते हो मेरे लाइव स्ट्रीम के अंदर, तब जाके आपको मिलता है एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको चाहिए कि आपको एक डोज कॉइन फ्री में मिले तो प्लीज ये लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट पे डिपॉजिट जरूर करना। जब भी पैसा है, देखो ज्यादा नहीं, आप गरीब इंसान हो समझ सकता हो, 100 रुपए तो हो गए, 200 रुपए भी हो गए, 300 भी हो गए। तो अगर आप मिनिमम 300 रुपए, 300 रुपए होता है $3, अगर आप मेरे लाइव स्ट्रीम पे मिनिमम $3 का डिपॉजिट करते हो यहाँ पे, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री, ठीक है। ये होता है किससे? एक डोज कॉइन से, यहाँ पे पहला डिपॉजिट करने के बाद। क्योंकि अभी तक तो अभी आपने सिर्फ एक अकाउंट खोल लिया है, अकाउंट खोलने के बाद में अभी तक आपने ना इन्वेस्टमेंट किया, ना डिपॉजिट किया, ना ट्रेड लिया। तो वो पहला डिपॉजिट सिर्फ और सिर्फ ये लाइव स्ट्रीम के अंदर थ्रू करोगे तो ही मैं आपको एक डोज कॉइन फ्री में दूंगा, अकाउंट खोलने के बाद में अभी तक आपने ना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तब जाके ही मैं आपको एक डोज कॉइन फ्री में दूंगा। पहला डिपॉजिट सिर्फ और अंडरस्टूड? ये लाइव समझ में आ गई बात? करोगे तो ही मैं आपको एक डोज कॉइन फ्री में लेने के लिए क्या करना है? एक डोज कॉइन फ्री, पहला डिपॉजिट करना, ठीक है। एंड फ्री में पैसा नहीं मिलता है यहाँ, मतलब पैसा मिलता है फ्री में पर उसके लिए कुछ देना भी पड़ता है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप है ना, कुछ दोगे तो मिलेगा, ऐसा वाला काम है। ये दूसरा भी एक डिपॉजिट का रिवॉर्ड है, अगर $20 डिपॉजिट करते हो तो उस पे मिलता है 10 गुना ज्यादा, मतलब $200 फ्री। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, पर उसके पहले पैसा डिपॉजिट भी करना पड़ता है कुछ। ये है डिपॉजिट का अमाउंट 20, एंड ये है आपको जो मिलता है फ्री में 200, ठीक है। ये दूसरा रिवॉर्ड है, ये पहला है जिसमें आपको फर्स्ट डिपॉजिट करना है लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट के अंदर, उस पर क्लिक करके, एंड देन आपको मिलता है एक डोज कॉइन फ्री। अगर यही पहला डिपॉजिट अगर आप 20 का कर देते हो तो आपको ये 200 यूएसडीटी प्लस एक डोज कॉइन दोनों साथ में मिलता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? इजी है, समझना उतना मुश्किल नहीं था। पहला डिपॉजिट, अगर सिर्फ एक डोज कॉइन चाहिए तो $3 का डिपॉजिट करो। हाय, हेलो, यूजर फ्रॉम इंडोनेशिया 7079, sorry, yeah, 79, yeah, 790038. Welcome on the live stream. Thank you so much for coming down to this platform. Thank you so much for joining in. If you are a new user, do tell me. Okay, I have reward for you. New user gift one Dogecoin after your first deposit. Once you complete your first deposit, and that too from the live stream deposit button only. If you make a first live stream deposit button, then and then only you will be receiving what? A fun Dogecoin free of cost. Okay. Live stream deposit is where this is live stream deposit.
once you complete your first deposit, and for learning trading, right now I'm teaching you regarding reversal chart pattern, in which you can find this reversal chart patterns inside the market, and you can predict if the market can go above or if the market can fall down. भैया आपने बोला था नए यूजर के लिए कुछ गिव करूंगा तो प्लीज दे दोगे? दे तो रहा हूं दे तो रहा हूं, मैंने मना क्या कर रहा हूं मैं? ये है ना, यहाँ पे मैं लिख के तो इतने बोल्ड अक्षर में लिख चुका हूं कि हाँ मैं देता हूं। क्या देता हूं मैं? एक डोज कॉइन फ्री में देता हूं मैं, बट उसके लिए पहला डिपॉजिट भी तो करना है। वेलकम पायोनिया, Pioneer. If I'm pronouncing your word bad, sorry for that. But welcome Pioneer on the live stream of zbit.com. तो हाँ, यूजर 1073531 मैं दे रहा हूं, पर उसके लिए पहला डिपॉजिट करना पड़ता है। पहले डिपॉजिट के बाद ही आपको डोज कॉइन मिलता है। ठीक है, पहले डिपॉजिट के बाद डायरेक्ट कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप पहला डिपॉजिट करो, आपको मैं एक डोज कॉइन फ्री में देता हूं। ये कंडीशन है उसकी। मैं दे रहा हूं, पर उसके लिए पहला डिपॉजिट करना पड़ता है। पहले डिपॉजिट के बाद ही आपको डोज कॉइन मिलता है। ठीक है, पहले डिपॉजिट के बाद डायरेक्ट कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप पहला डिपॉजिट करो, आपको मैं एक डोज कॉइन फ्री में देता हूं। ये कंडीशन है उसकी। मैं दे रहा हूं, पर उसके लिए पहला डिपॉजिट करना पड़ता है। पहले डिपॉजिट के समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड? Even user 709979900038. If you are a new user, get one Dogecoin completely free of cost from my side. Plus, if you are an existing user, there is gift for you as well, which is basically deposit. If you are a new user, get one Dogecoin completely free of cost from my side. Plus, if you are an existing user, there is gift for you as well, which is basically मुझको कैसे मिलेगा डिपॉजिट करने के बाद? मेरा पास तो फोन पर भी नहीं है, फोन पे भी नहीं है, तो मैं मेन डिपॉजिट कर सकता, तो मैं मेन डिपॉजिट फोन पे गूगल पे कोई भी चीज नहीं है ऑनलाइन। आप पैसे ट्रांसफर कैसे करते थे? फिर लोगों को पैसे कैसे भेजते थे? फोन पर भी नहीं है तो फिर बनाओ फोन पे गूगल पे, 2 मिनट बन जाते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। फोन पे गूगल पे कोई भी चीज नहीं है ऑनलाइन। आप पैसे ट्रांसफर कैसे करते थे? फिर लोगों को पैसे कैसे भेजते थे? नहीं है तो फिर बनाओ फोन पे गूगल पे, 2 मिनट बन जाते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। हाँ, फोन पे गूगल पे कोई भी चीज नहीं है ऑनलाइन। आप पैसे ट्रांसफर कैसे करते थे? फिर लोगों को पैसे कैसे भेजते थे? नहीं है तो फिर बनाओ फोन पे गूगल पे, 2 मिनट बन जाते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ठीक है, यूजर, all user, everybody who is watching my live stream right now, please make sure to understand, new user gift is for first deposit. If you make a first deposit inside my live stream, okay, this is my live stream, if you click on this deposit option and make your first deposit, then I give you what? I give you one Dogecoin completely for free of cost. Okay, and second thing, if you are not the new user, maybe you are not the new user, you are existing user. So for existing user, as you can see, deposit 20 USDT at the same place of the live stream deposit, and I will give you 200 free USDT, 10 times bigger reward you can receive from my side. Over here you can see as well, can you see gift? Click on that gift, and in that gift section you can see deposit 20 and get 200 USDT free for taking a trade in Ethereum and Bitcoin. Bigger reward you can receive from my side. So do not forget this option. Plus,
If you haven't joined my live stream channel till now point, please make sure to join my Telegram channel. This is my Telegram channel over here in which I'm available even after my live stream. I'm available. I'll be helping you with whatever XYZ reason for all of you people. Okay, I'll be helping you all. Join my live stream group over here. My live stream channel till now point, please make sure to join my Telegram channel. This is my Telegram channel over here in which I'm available. Now, as we were discussing regarding and I'll be helping you with whatever XYZ reason for all of you people. Okay. So, join my live stream group. Minimum two support should be there. Maximum four can be there. Okay. S1. Now, as we were discussing regarding and S1, S2, S3, S4. Maximum four support market can take, and after that breakout can happen. Minimum two support market can take, and after that breakout will happen. Understood? Same thing. Now, let's understand how to trade. Conditions are what of this market, of this pattern. First, we need an uptrend, which is a buying. After that, all the R1, R2, R3 should be gradually increasing. Okay, I will write it down over here. Resistance. Now, let's understand how to trade. Conditions are what of this market, of this pattern. First, we need an uptrend, which is a buying. After that, all gradually. The R1, R2, R3 should be gradually increasing. Okay, increase. I will write it down over here. Resistance. Now, let's understand how to trade. Conditions are what of this market, of this pattern. First, we need an uptrend, which is a buying. Even 20 is very big. 16. Resistance should gradually increase. Okay, we can see it is increasing. R1 is little smaller, R2 is little above, R3 is more above. Can we see resistance is gradually increasing? Okay, after that thing, support, same with support. Support should be also gradually increasing. This is the third condition. Support, R1 is little smaller, R2 is little above, R3 is more above. Can we see resistance is gradually increasing? Okay, support should increase, gradually increase, blah blah blah. Support should increase. Got it? Conditions are what? First, we need an uptrend. This chart pattern should form in an uptrend only. There is a reason for that, which I will tell you. First is that market should be in an uptrend. After that, it should fall. Support should gradually increase. R1, S1 is over here. S2 should be above S1. Or if S3 forms, S3 should be above S2. Same goes for resistance. R1, if the first R1 is made, after that R2 will be above R1. We can clearly see. And R3 will be above R2. Okay. After that, why it is required, let me tell you. Okay, if you see this one situation till right now point, the market is in an uptrend because it is making higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and right now we got a breakout. But understand this one thing in the market, that it is becoming smaller and smaller. Even though support is increasing, even though the resistance is increasing, but it is going in a very small and consolidating a lot. That means what? Strength is getting decreased. Okay, which will tell us that right now the market will change the trend from uptrend to a downtrend, making it an active sellers over here. That means what? Strength is getting decreased. Okay, which will tell us that right now the market will change the active sellers who are pushing the market down. Got it? Easy to understand. It is not very difficult to understand. It's very simple, very easy to understand. After this thing, active sellers who are pushing the market down. Got it? Easy to understand. It is not very difficult to understand. It's very simple, very easy to understand. Welcome user 644397. Welcome user 838375. Welcome on the live stream. Thank you so much for coming down. Thank you so much for that. There are two gifts. New user gift, 1 Dogecoin free. Existing user gift, deposit 20 and get 200 USDT free. It is all for you all people. Okay.
So make sure that this deposit is a live stream deposit, which is here. This is that deposit button. If you click on this deposit button and make your first deposit, or if you are existing person and make 20 USD deposit inside this live stream over here, then you get what? A 200 USD completely for free of cost. 200. It's not a small amount. If you click on this deposit button and make your first deposit, it's a very massive, big amount which you can receive. Okay, now we understood rising wedge pattern, how it forms, why it makes a downtrend. Also, we saw because of the lack of the strength, which is consolidating in one way, even though it's uptrend, because still it is consolidating. That's why. Okay, after that, what do we see? What do we see? We will, I will show you how to take a trade now. Okay, whenever in the market we will get a breakout, the support line which we made, if it receives a breakout, this is our breakout which we can see, this is what the support line, and this line broke the market down. This point is what our breakout entry. This is what I'm showing you how to enter in the market. Okay, this is how you will enter in the market with a breakout entry. This is our breakout which we can see, this is what the support line, and this line broke the market down. This point is what our breakout entry. This is what I'm showing you with the breakout entry. You can clearly see the breakout entry over there when the line will break, and that's my breakout entry. I will take a breakout entry. After this breakout entry, what we can do? With the breakout entry, you can clearly see the breakout entry over there when the line will break, and that's my breakout entry. I will take a breakout entry. After this breakout entry, what we can do is find a stop loss. I told you this one thing, the chart pattern itself will tell you each and everything about himself. He will give you entry, he will give you stop loss, he will give you resistance, every of those things. Okay, so first thing over here, this becomes the last resistance of the market is my what? Is my stop loss. Last resistance of the market is my stop loss. Whatever is the last resistance, okay? Is my stop loss over here. Got it? Easy to understand. Now, what about the target? The target will be the distance between R1 and S1. The first resistance and the first support. Whatever the distance is, just take that distance over here and grab it and put it from the breakout. That will be your target, which you will achieve very easily. Okay. Welcome user 549941. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. Thank you so much for coming down over here. There are new user gift, one Dogecoin free, and then there is existing user gift, which is deposit 20 and get 200 USDT free. Okay. Welcome user 549941. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. Thank you so much for coming down over here. There are new user gift, one Dogecoin free. I showed you how to trade as well. Breakout entry we will take. Stop loss will be your R3 or R4, whichever is the recent most resistance. And from there, target is distance between R1 and S1. This line is just the distance of this, and I will put the same line from the entry, and this will be my target. Or it can start, it can go to the starting point as well. But starting points are risky. Maybe sometime market don't go, there is no strength of seller as well. Okay, so the very easy distance, very easy profit you can make is distance between R1 and S1. Okay, now I will show you the same exact thing, same exact rising wedge pattern we will observe in what? We will observe the same situation inside the, these are anchored ones, right? You are not anchored. Now I will show you the same exact thing, same exact rising wedge pattern we will observe in what? We will observe the same situation inside the, these are anchored ones, right? You are not anchored.
Okay, it's anchored now. Okay, I've showed you rising wedge pattern, how it looks, everything. Now let's find that pattern, same exact pattern inside the market over here. Okay. It's anchored now. Okay, I've showed you rising wedge pattern, how it looks, everything. Now let's find that pattern, same exact pattern inside the market over here. Okay. I've showed you rising wedge pattern, how it looks, everything. Now let's find that pattern, same exact pattern inside the market over here. Okay, we spotted our first pattern over here. Can we see it very clearly? See, I'll draw the trend line and you will start seeing it. Okay. Okay, we spotted our first pattern over here. Can we see it very clearly? See, I'll draw the trend line and you will start seeing it. Okay. And second thing is we spotted our first pattern over here. Can we see it very clearly? See, I'll draw the trend line and you will start seeing it. Okay. Can we see the same pattern over here? I will draw it. I to made the trend lines already, but I will draw it as well for you. First we saw this, then R1, S1, R2, S2, R3, R4, S4, S3, then R5, and then we got the breakout, which is somewhere around till here. Okay. I to made the trend lines already. Can we, if I take this thing aside, can we see the same exact structure over here? Sometimes the structure might become a little loose, but yes, it is a rising wedge pattern. We can see exactly like this. If I point it out, can we see same structure? Can we, if I take this, is this a same structure? Market going up, R1, S1, R2, S2, R3, S3. Sometime I told you support can be increased as well. That is completely okay. It will form like a triangle kind of structure. Resistance will be gradually increases. Resistance is increasing, support is increasing, and we'll get a breakout. Can we see same exact thing over here? S1, R2, S2, R3, S3. Sometime I told you support can be increased. Can we see same exact thing? Uptrend is there, active buying is happening. After that, resistance is gradually increasing. Can we see resistance is gradually increasing or not? Yes, we can clearly see the resistance is gradually increasing in the market. This, if I draw a line, okay, R1 line, R2 is above that, higher high. If I draw R2 line, R3 is above that. Can we see it clearly? Yes. After that, what we can do is, we'll see for the support as well. Okay. S1, R1 line, R2 is above that, higher high. If I draw R2 line, R3 is above that. Can we see it clearly? Yes. After that, what we can do is, we'll see for the support as well. Okay. S1, okay. Can we see S1 over here? S1, S2. Yeah, this is S2, this is S3, S4, and S5 give a breakout over here. Same situation, breakout scenario, we can clearly observe over here. The market gave us a breakout from this point. Okay. Okay. Can we see S1 over here? S1, S2. This was our breakout happened. After the breakout, a little again market take the same resistance over here, but our stop loss is where? Our stop loss is over here. This is R3. I told you R3. This was our breakout happened. After the breakout, a little again market take the same resistance over here, but our stop loss is where? This is my R3 over here. This is R3. I told you R3, right? I told you R3 will be my what? R3 will be my stop loss.
Okay, R3 is my stop loss over here. We can clearly see R3 is my stop loss. This is my R3. That is here, right? I told you R3 will be my what? R3 will be my stop loss. Okay, after that R3 stop loss, can we see a breakout over here as well? Let me just delete and make it very clean so everybody can see it very clearly. Okay, so this is my breakout over here. I told you exactly same like this. We will see that this line, the support line, will have a breakout over here. Can we see a breakout? Yes, this is our what? Breakout. And that's the exact point I told you all people, that we have to make what? A breakout entry. This is my breakout over here. I told you exactly same like breakout entry. See that this line, the support line, will have a breakout over here. Can we see a breakout? Yes, this is our what? Breakout. And that's the exact point I told you all people, that we have to make what? A breakout entry. This is my breakout entry. Okay, that's my breakout entry. I got stop loss, I got breakout entry. Now the next thing what I said to you all people is, either it can become at a starting point. Can we see a starting point over here? Yes, this is the starting point of the market. This was the starting point of the market. Either it can go straight to the starting point, we can clearly see market came to starting point, or simply what we can do is distance between R1 and S1. Can we see how much is distance between R1 and S1? 6.698. Okay. From the breakout, we will observe 6.698. This is 7. Yeah. Can we see our whatever market gave us the entry is achieved? We got the profit as well, right? 6% market fall from here, and 6% market R1 and S2 distance how much? 6.98. Can we see market fall more than 7% over here? If I calculate how much market fall from this point to the entry was also 12.5950%. Understood? So this much profit you can easily make by making an understanding of rising wedge pattern. This is a rising wedge pattern over here. Okay, I explained you the same pattern. Can we see same exactly the same exact pattern? Rising wedge pattern, resistance increasing, support increasing, active buying first, and then we get the active seller. This is an uptrend only, but uptrend which is consolidating, squeezing. And this squeezing uptrend means what? The buyers are not in the strength, and soon it will be taken over by what? By the sellers. Understood? This is how you will identify what? A rising wedge pattern. I showed you in the market as well how the pattern will look like. Okay, this is my rising wedge pattern. Exactly same like that. Resistance increasing, support increasing. Got it? Understood? This is how you will rising wedge pattern. Exactly same like that. I showed you in the market as well how the pattern will look like. If I see in a lower time frame, exactly same like that. Resistance increasing, support increasing. Got it? Rising wedge pattern. Exactly same like that. If I see in a lower time frame, yeah, can we see in a lower time frame? Same thing. Resistance gradually increasing, support gradually increasing. I will delete it and I'll show you once again. No, it's fine. Breakout happened. After that breakout entry we got very clean and clear entry. Resistance already taken, one more resistance taken, and from there again the market came down to the start point. Can we see a rising wedge pattern over here? Very clean, clear rising wedge pattern. How many support it has taken? Three support. First support was made over here, second support, third support, and fourth gave us the breakout. Okay, can we see a rising wedge pattern over here? Very clear. Understood? Simple, very easy to understand. Rising wedge pattern. Got it? Now I'll be going on just a very small break of 5 to 10 minutes. After coming from the break, I will explain you all people regarding the second, which is our falling wedge pattern. Okay, we saw rising wedge.
Now I'll make you understand falling wedge pattern just after one small break after 5 to 10 minutes. Okay. Got it? Now I'll be going on just a very small break of 5 to 10 minutes. After coming from the break, I will explain you all people regarding the second, which is our falling wedge pattern. Okay. We saw rising wedge. Now I'll make you understand falling wedge pattern just after one small break after 5 to 10 minutes. Okay. Now I'll be going on just a very small break of 5 to 10 minutes. After coming from the break, I will explain you all people regarding the second, which is our falling wedge pattern. Okay. We saw rising wedge. Now I'll make you understand falling wedge pattern just after one small break after 5 to 10 minutes. Okay.
Okay, now let's understand the eighth pattern, which is called as falling wedge pattern, which is our okay. Now let's understand the eighth pattern, which is called as bullish pattern. Okay, wedge pattern, which is our so bullish pattern. We understood our rising wedge pattern. I showed you inside the market as well. How does a rising wedge pattern looks like? How to find it? What are the conditions for the rising wedge pattern? Now we'll understand the condition of falling wedge pattern. Okay. First, let me just draw the falling wedge. I'll show you everything regarding. We understood our rising wedge pattern. I showed you inside the market as well. How does a rising wedge pattern looks like? How to find it? What are the conditions for the rising wedge pattern? Now we'll understand the condition of falling wedge pattern. Okay. First, let me just draw the falling wedge. I'll show you everything regarding. We understood our rising wedge pattern. I showed you everything regarding. It always won't look very accurate. Okay, sometimes you have to adjust with it. You have to find your own pattern. It will not look accurate all the time, but you can find it very easily. It always won't look very accurate. Okay, sometimes you have to adjust with it. You have to find your own pattern. It will not look accurate all the time, but you can find it very easily. Okay, so this is how our falling wedge pattern will look like. Let's forget it. We can. Okay, so this is how our falling wedge pattern will look like. Let's forget it. We can. Okay, so this is how our falling wedge pattern will look like. Okay, this is how a falling wedge pattern will look like. Completely opposite of the rising wedge pattern. We'll understand each and every of those things. Let's start with the trend. The first trend a rising wedge pattern should have is an down trend, which is basically your what? An active selling should be there. Okay. This is how a falling wedge pattern will look like. Completely opposite of the rising wedge pattern. Selling. We'll understand each and every of those things. Let's start with the trend. The first trend a rising wedge pattern should have is an down trend. First we will have is an active selling. Okay, active selling will get convert. Second. Oh, my bad, my bad. First we will have is an active selling. Okay, active selling will get convert. Second. Okay. Oh, my bad, my bad. First we will have an active selling.
and that active selling will get converted into what? An active buy. How does it convert? How does it get converted? Each and every other things we'll understand. First things, when the market is falling down, obviously market will keep falling down, and at one point there will be a support will be taken, because seller don't have, like sellers or buyers or whoever there are, they don't have a constant strength inside the market. The constant strength inside the market is very hard to find. So if you want to find a constant strength, we require institutional, corporate, or whales in the market. Those people who come with very big amount, though those people can have a very huge investment, very huge downfall on the market. Okay, but if there are just retail investors, the constant strength is not there. So after, if the constant strength is not there, then what will happen? First, S1, that is a support one will be made in the market. Okay, support one is what? When the market is falling down like this, there will be, it's not about the price, support line or S1, it's an imaginary thing. Okay, what happens over there, that the strength of the seller gets weak, and then that weak strength takes over by the buyers who will push the market little up, or the people who have sold over here. For example, let's say people sold over here, they will try to book their profit and they will try to buy it. Like for people, they will sell it and some people will buy it over here. So as they are selling it at a more cheaper price over here, people will buy it and then they are having a profit from it. Okay, so S1 becomes what? My first support from where buyer center and seller exits. Got it? Simple. Okay, that becomes my S1. After that, same thing, market went up, and after market going up, after market going up, what do we saw? We see one thing, that resistance is created. Now, this gives a situation that a downtrend will continue. Why? Because after a lower low, a lower high is made. This is R1 is basically our lower high, because as we are having active selling, which means what? A downtrend is there. Downtrend makes is being made by what? A lower low, lower high, lower low, lower high, and that's how a downtrend is made. Okay, after this downtrend is made in this way, what are we going to do is, first thing, S1, buyer center, early buyer center in the market, and R1, the people who couldn't enter at this price, they will enter at here. Same situation like rising wedge. R1 created, then again from the buyer position, sellers are created. Now this is a very important thing to observe. S2 is very important thing to observe. Why? Because S2 is actually gonna create a lower low. That lower low, from this point to this point, if you go, can you see the S1's line? The S1 price has been taken down more by the S2. This is what are lower low. Okay, so this is lower low over here, which is S2. Now, if market goes up again and create, obviously by the buyers, market will have, market will go up again. This will become our R2. Now, if R2, as I can see that R2 is clearly below the R1, below R1, that means what? Resistance is falling, and this is created what? A new lower high. That's what we need. That's exactly what we need. If a downtrend, if I draw a downtrend over here, this is how downtrend should be, making lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, gradually falling down. Support is gradually falling down. This is our downtrend, right? So same downtrend is forming over here. First lower high was made, then lower low, and now again lower high. It gives us confirmation of what? Downtrend is there. Then if with a confirmation of downtrend, why do we take a buy entry? Why? I will explain you. First, again the same thing, S3 will be made over here. See, support can be taken at like thrice, three supports or four support or two support. It depends on the market now. If market wants to make two support, that is also fine. Market wants to make three support, that is also fine. Market wants to make four support, that is also fine.
This support increasing or resistance increasing is just like the seller over here are not ready to give away. Whenever the sellers are ready to give away their active trend to somebody else that is a buyer, then we see a breakout. Okay, when the seller's strength is completely taken away, then the breakout is observed. Doesn't matter if it's created with a 3 support or 4 support, does not matter at all. Whenever the sellers are ready to give away their, generally we see 3 support or 4 support. That's why I'm not drawing 2 support over here. Okay, this is my R3 over here, same point. Seller is trying to push away the market down, but and then this is the last point, which is my S4. S4, my last point. Now understand this one thing over here. What do we observe? Even though the market is in a downtrend, even though market is in a downtrend, we can clearly see that a market is in a downtrend. Yes, R1, R2, R3 making lower high, lower high, lower high. S1, S2, S3, S4 making lower low, lower low, lower low, lower low. Everybody is making lower low. Welcome user 867136. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part over here. I will draw the same scenario so that you can make it. Making lower high, lower high, lower high. S1, S2, S3, S4 making lower low, lower low, lower low, lower low. Everybody is making lower low. Welcome user 867136. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part over here. Okay. S1, S2, S3, and S4. Same situation, downfall, 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 lower low, lower low, lower low, lower low. Everything is what falling down. Welcome user from Indonesia 213110. Do not forget that you have a new user gift, which is a one Dogecoin. If you are a new user, please make sure to make a first deposit inside the live stream option. Okay. And for existing user, if you deposit 20, then you get 200 USDT as a credit. Okay. Do not forget that you have a new user gift, which is a one Dogecoin. If you are a new user, please make sure to make a first deposit inside the live stream option. Okay. And for existing user, if you deposit 20, then you get. So what do we observe? R1, R2, R3 lower by each other. They all are lower, 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 making lower high, lower high, lower high. And S1 also S3, S4 is also making what? Lower low, lower low, lower low, lower low, lower low. Right? Everything is exactly like this. This is making lower highs, this is making lower lows. What is it? It's a downtrend, obviously. How do we define downtrend? By lower low, lower highs, lower low, lower highs. Exactly. But then why it is changing the active selling? It should fall more down. Why it is not falling? Because as we can see, even though the strength is of active selling, even though there are sellers inside the market who is making a downtrend as well, but we can clearly see slowly, slowly, slowly. Can you see the movement of the market falling down is decreasing? Sellers are not able to make the carry out the strength whatever they need to push the market complete to the depth. They are not able to do it. The strength is getting decreased. It is consolidating. For example, like if it continues, this is consolidation. It's becoming smaller, smaller, smaller. If it becomes smaller, 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 that means what? Seller's strength is decreased, and this decrease of a strength is basically a chance for a buyers to increase their output and make a breakout and give a active uptrend. Understood? Very clear. Seller's strength is decreased, and this decrease of a strength is basically a chance for a buyers to increase their output and make a breakout and give a active uptrend. Okay. Active selling, S1, S2, S3 condition is what? Support should be gradually falling down. In the rising wedge, we were seeing the support should gradually go up. But in here, support should be gradually falling down. Okay. Active selling, S1, S2, S3 condition is what? Support should be gradually falling down. In the rising wedge, we were seeing the support should gradually go up. But in here, support should be gradually falling down. Support decreasing.
resistance decreasing. Understood? Two things should happen. Support should be decreasing over here, and so is the resistance. Resistance should also be decreasing at this point. These are the condition. First is that market should be in a downtrend. Active selling should be there, coming from high price to the low price. From there, the consolidation in the downward movement. It's a downtrend, but a consolidated downtrend. Okay. After that, we just have to wait for what? One resistance to get break. Active selling should be there, coming from high price to the low price. From there, the consolidation. Now this is what? This is my movement. It's a downtrend, but a consolidated downtrend. Okay. After that, we just this is my for what? One breakout entry. Wherever I see that there is a breakout happening, now this is what? That's my entry over there. Breakout entry. This is my this is what? My breakout entry. Understood? Got it? Clear? Very clear. Breakout entry over here. After this breakout entry, after this breakout entry, what do we require? A stop loss. Obviously, the last most recent stop loss is what? My S4, and that will be my what? Stop loss. For taking a trade, we require three things: entry, stop loss, and target. They all three will be given by the chart pattern itself. You don't have to make use of your brain extra. Nothing. You just have to observe and put it. That's all. This is my what? Stop loss. S4, the last support of the market, is my stop loss, because even if market decides like it is gave a breakout, but it is coming back again, it will come back to the resistance only. The resistance will act as a support at that point from where the market will jump. Okay, so that my S4 is completely safe over here. After that, target. What can be my target? Target is very simple. Distance between R1 and S1. Whatever is the distance, that distance is my target over here. I will put it at this, and exactly over here will be my target. From my breakout to entry, safe and secure target. This is not some that target which can be like for example some amount of that target which can be fake. No, this will be very safe and secure target. But if you want to have a proper big amount of target, then you can go for the start of the downtrend. Wherever the market started having a downtrend, that can be your target. Risky target. Understand my point? Risky target it is. Your safe secure target is basically distance between R1 and S1 will be your the most safe target. Understood? Everything understood? Your target, entry, stop loss, the pattern itself, three condition: downtrend, resistance decreasing, support decreasing, which is our consolidated downtrend. Understood? Okay. Now what are we gonna do? Let's find the same pattern, falling wedge pattern inside the market. Okay, so that you will get to know everything. Let's find from the starting. Falling wedge pattern inside the market, how it might look like, and every of those things. Falling wedge pattern inside the market. Okay, so that you will get to know everything. Let's find from the starting. Falling wedge pattern inside the market, how it might look like, and every of those things.
I will help you find it. Okay, don't worry. I will help you find it. Okay, don't worry. Yes, can we see it over here? No, it's not the one. I need accurate one. Yes, can we see it over here? No, it's not the one. Falling wedge. Falling wedge. Accurate one. Yes, can we see it over here? Falling wedge. Falling wedge. Yes, we can clearly see a falling wedge over here. Can we see a falling wedge over here? First, what did we require? The market to be in a downtrend. Yes, we can clearly see a falling wedge over here. Can we see a welcome user 391783. Welcome on the live stream. Okay, so this is our falling wedge pattern over here. First thing, what do we observe is market is having a downtrend. Yes, we can clearly see market is falling from high price to the low price. At one point, it is having a support from the market. One second. Fall. Okay, so this is our falling wedge pattern. Falling from there, having first support, then resistance. Market is falling from high price to the low price. At one point, it is having a support from the market. Fall. Falling from there, having first support, then resistance. Okay, if we draw it a trend line over here, can we see a triangle pattern? This is one and this is the second. Okay, if we draw it a trend line over here, can we see a falling wedge pattern over here? Yes, we can clearly see a falling wedge pattern, and from here we got a breakout completely straight toward that. Exactly looks like our falling wedge pattern. Resistance R1, R2, R3, S1, S2, S3. Okay, leave this one, leave this S1 over here. We will leave this one over here. And S1, S2, S3, S4. I will denote each and every of those things over here. This is my S1 in the market. It's my S2 over here. Leave this one, leave this S1 over here. We will leave this one over here. And S1, S2, S3, S4. I will denote each and then it is S3. This is my S1 in the market. And the last is S4. S2 over here. Right? Everything is gradually falling down. That's what we need. Gradually falling down and decrease in the size. Okay. This is my R1. And the last is R2. Right?
everything is gradually falling down. That's what we need, gradually falling down and decrease in the size. Okay, this is my R1, R3, R2. Okay, and then we got a breakout over here. This is my what? This is my breakout over here. R3. Okay, and then we got a breakout over here. This is my what? This is my breakout over here. My breakout entry. Got it? This is my breakout entry in the market. Okay, and about the stop loss, I told you as well, the stop loss will be my the last support taken by the market. This is the last support taken by the market. This is my breakout entry in the market. Okay, and welcome user 870254. Welcome on the live stream. Thank you so much for joining in. I'm explaining you reversal chart patterns in which you can predict and early changes in the market. Just if you know reversal chart pattern, every of this reversal chart pattern, if you know, you can predict the market very easily. Change from this to this. How to predict this thing? I'm explaining you that thing. Okay, so we can clearly see our pattern over here. R1, R2, R3 gradually falling down, S1, S2, S3, S4 gradually falling down. After this fall down, what we need is just one single breakout. This is the place where we got the breakout, and that's my breakout entry. Stop loss over here. I told you that your entry can be the distance between R1 and S1. At this point, the distance between R1 and S1 is very small, so you can consider as a half, twice the size of that. Okay, this is one size. Somewhere around here, like obviously it's calculated with this. This is 2.6, then it can be 4 point something. 2.6 is almost 6. Let's take a 6. Okay, 2.6 is almost 3, so we'll take 3 plus 3, 6, and that's my target. From the breakout, I will go for 6. Can I see? I can easily achieve my 6% of market over here. Very easily achieved. This is why you should be knowing regarding a falling wedge pattern, all the reversal. This is the 8th pattern which I'm explaining over here. 8th. Okay. There are more 2 pattern which is remaining. One is broadening wedge and broadening top and broadening bottom. Okay, that is a 2 pattern which is remaining. After that we will finish our chart pattern scenario over here. We'll completely finish a chart pattern scenario. Just 2 are remaining. One is broadening top and broadening wedge. Okay, cool. And broadening top and broadening bottom. Okay, that is a 2 pattern which is remaining. After that we will finish our chart pattern scenario over here. We'll completely. I hope you understood the falling wedge, how to identify it, trend down, condition, R1, R2, R3, S1, S2, S3, S4 down. Got it? So resistance falling, support falling, match the lines. It should form little a triangle kind of pattern. After finding a triangle kind of pattern, wait for a breakout of resistance. That is your entry. Stop loss is S4. Target is almost double the size. If R1, S1 is small, then go for twice the size of the distance. If it is already big, then go for that. Okay, easy. Now let's understand. 4. 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
double the size. If R1 S1 is small, then go for twice the size of the distance. If it is already big, then go for that. Okay, easy. Now let's understand.
Welcome user 557608. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part. Thank you so much for coming down over here. Appreciate all the people joining this live stream. As you can see, there are two rewards, by the way, for all the users. One second. Can you see a new user reward, which is one Dogecoin free you get after making a first deposit inside the live through the live stream deposit. After that, there is an existing user. If you are not the new user, you are existing user. And the same way, if you do the deposit from the live stream and make a 20 USD deposit, you get how much? 200 USDT free of cost. So if you want to achieve 200 USDT free of cost, then you need to deposit to 20 USDT through the live stream. Where is the live stream deposit? Can you see over here? This is my live stream deposit button. Got it? So if you do the live stream deposit button from here, then you get how much? 200 USDT free for taking a bigger trade in Ethereum or in the Bitcoin. Okay. Where is the live stream deposit? Can you see over here? This is my live stream deposit button. Got it? So if you do the live stream deposit button from here, then you get how much? 200 USDT free for taking a bigger trade in Ethereum or in the Bitcoin. Okay. Broadening top. Reversal chart pattern. In the ninth, we are understanding a broadening top pattern, which is our short. Broadening top, which is basically a bearish pattern. Reversal chart got it? Pattern in the ninth. Let me draw it how it looks, and then we will continue with it. Short. Which is basically a bearish pattern. Got it? Let me draw it how it looks, and then we will continue with it. This is how a broadening top will look like. Okay. First, this is how a broadening top will look like. Okay. First, got it? This is how our broadening top pattern will look like. Exactly like this. It's like you can consider like a alligator or crocodile's mouth, which is open like this. Okay, to eat up right now. That's how it will look like. It will look like a top, broadening top. This is the one. Okay, this is how got it. Very simple, very easy to understand. Exactly like this. It's like you can consider like a alligator or crocodile's mouth, which is open like this. Okay, one thing, what do we observe at the first stages over here, which is our what? An active buying which is happening, as it's a bearish pattern, which means it is gonna give you an active sellers. You have to put a short position in the future trade. Okay, so this is an active buying which is first happening, which is our what? An active buyers are there in the market. It's a bearish pattern, which means it is gonna give you an active sellers. You have to put a short. Got it? Active buyers are there inside the market. After this active buyers, once the market is above, then same thing we are gonna create. The market will make resistance one, support one, resistance two, support two, resistance 3. Such kind of structure will able to see in the market. Got it? Active buyers are there in just a second. After this active buyers, once the market is above, then same thing we are going to create
The market will make resistance 1, support 1, resistance 2, support 2, resistance 3. Such kind of structure will able to see in the market. So the first thing, what after a continue active buying, obviously the strength will decrease. Once the strength is decreased, what are we going to do is we're going to put R1 over there. That is our resistance point one, the first point from where the market will fall. And understand this one scenario over here, that this broadening top pattern will not give you uptrend and will not even give you a downtrend. It will give you something which is in between, neither a downtrend, neither a uptrend. Because a downtrend should have what? Higher high, higher lows, right? In the broadening top pattern, you will be having higher highs and lower lows, which is complete like it's virus you can consider, because a downtrend will require lower low, lower low, and uptrend will require lower high, lower lows, right? In here, we are not able to see both. Both will be not there. In the broadening top pattern, you will be having higher highs and lower lows, which is complete like it's virus you can consider, because a downtrend will require lower low, lower low, and uptrend will require lower high, lower lows, right? In here, we are not able to see both. Okay. Both will be not. So first we made what? An R1 and resistance 1. And then we made the support one, which is S1, made by the buyers over here. Okay, support one made by the buyers over here. R1 we made, then we made S1. R1 made by what? The sellers. S1, when the market was falling down, then again the people saw it in a cheaper price, they entered, or the buyers who couldn't enter at the first place entered at the S1. From there, market went up above the R1. Till here, what are we seeing? Till here, we are able to see. If I draw a trend line over here, I will draw it later. If I see this, R2 is above R1 over here. R2 is above R1, suggesting what? An higher high is made. Suggesting what? That higher high is made, which can tell us that market is in an uptrend. Okay. After that, from R2, market started to fall down, fall down, fall down, and it went below S1. And that was a tricky question for you, for us, because neither market is in an uptrend nor market is in a downtrend. It is making higher highs and lower lows, which is not possible. So that's why it is a broadening top pattern in which resistance is increasing and support is decreasing. Understood? This is how our broadening top pattern will look like. It is making higher highs and that's become my S2 from the first place we will get to the support. Broadening top pattern in which resistance is increasing and support is decreasing. Understood? This is how our broadening top pattern will look like. And from here again, the support market will make above positions, which is basically our buy positions are opening over here as to, because market the buyer saw it at a cheaper price, cheaper than the S1, lower low is made, more buyer entered because they found in a more cheaper price, they entered and they made the market go at the R3, our last resistance. Okay, sometimes the resistance can increase as well. You don't have to worry regarding that. Just make sure your conditions are okay. Just make sure that the conditions are true. More buyer entered. This is my R3 over here. Okay. After that, R3 will either we can make S3, another support we can make if the buyers are not like buyer strength is completely not ended, then it can make S3 as well. This S1, S2, S3 are just an extra strength which buyer is trying to push. Like, no, I'm not ready to give away my trend to the sellers and try to push the market down. Okay, that's the only thing of why market made S1, S2 or S3. Okay, that's the only thing. After that thing, what can we see over here is S3, either S3 can be made or we can have a breakout over here. This breakout is basically what? Now the strength is gone of the buyer and it is given to who? It is given to seller. Okay.
Now, this is the breakout where we will start our trade. A trade is required three things: entry, exit, that is our target, and one more thing, that is our stop loss. Okay. In this case scenario, people most of the time I'm telling you this one thing, that we get one bad thing. As the distance between R3 and this breakout will obviously be very longer. So to just to get confirmed that it will give a breakout, or it will be an S3, or it can go up, for that thing what do we have? We get one thing, that R3 and the breakout distance of profit will lose for the confirmation, because the time the market starts falling from R3 we don't get to know if it's gonna take, if it's gonna make a breakout or it's gonna take a support. We don't know about it. Okay. So in that situation, please always make sure even the distance between R3 and the breakout may look good, may look big to achieve that amount of profit as well, but do not enter for that situation. Okay. Do not enter. It is not suitable for us to enter in that situation. In that situation, please always make sure even the distance between R3 and the breakout may look good, may look big to achieve that amount of profit as well, but do not enter for that situation. Okay. Do not enter. It is not suitable for us to enter. It is not suitable in that situation to go for this R3 and S3 distance. Okay. Please, after the breakout only we are going to enter in the market. This is our breakout position, and from this breakout itself we are going to make an entry. From this breakout itself, this is my breakout entry. Now people will think about this thing, like all the time whenever I said to you one thing, that I require what, that the R3, whenever it's a short trend we have to take, my resistance will be my stop loss. But in this case resistance is so high, am I really going to keep that high resistance, high stop loss? No, obviously not. What are we going to do? All the time whenever I said to you one thing, that I require what, that the R3, whenever it's a short trend we have to take, my resistance will be my stop. Then what are we going to do for this breakout? What are we going to do? Am I really going to keep that high resistance, high stop loss? No, obviously not. What are we going to do? Okay. What are we going to do about this breakout entry? How are we going to enter for this breakout entry? What are we going to do? Once the breakout entry has happened, we need stop loss. R3 is a very big stop loss for us, even though that's the point where the true sellers enter in the market. That's the reason why we had a breakout. But can we keep at this high price? No, we cannot keep at this high price. So in this broadening top pattern, the one thing which we can do is, whichever candle gave you a breakout, that candle's high will be your stop loss. A small stop loss, very small. Either you don't keep a stop loss or keep a very small stop loss. That's the one condition which I want to give you. Either keep a stop loss or either don't keep a stop loss. It's up to you. Okay. Target will be very simple, very same. The distance. A small stop loss, very small. Either you don't keep a stop loss or keep a very small stop. That's the one condition which I want to. Target will be my distance between R2 and S2. Whatever distance an R2 and S2 is having, that's my target over here. Welcome back, Chaman, on this live stream. Thank you so much for coming on this platform. Thank you so much for coming down. These are the two new users reward. I have told you already this thing, but just to inform you again, these are the two rewards which we are offering right now. Gift, new user gift. When you make the first deposit inside the market, you will get one Dogecoin free, and one, and after that, existing user reward, which is if you deposit 20 USDT, you get 200 USDT free of cost. Okay. Right now, I'm explaining you broadening top pattern, in which how to enter at broadening top pattern, how to identify if it's a broadening top pattern. I'm discussing that thing. The condition are very simple. First, we need an active buying, and after that, we require resistance. Hello. Yeah. So as I was telling you, if you are a new user, haven't joined my Telegram channel as well, please click on this. Hello. Yeah, hello, hello, hello. Hi, 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 Chaman. Hi. Do you have anything you want to say to me? Any questions, any doubt, anything
which you want to ask, please feel free to ask. Okay. And also tell me that which language is suitable for you. If you want to speak in Hindi, मुझे हिंदी भी आती है, मैं हिंदी में भी बात कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको हिंदी में समझनी चीज़ें तो प्लीज़ हिंदी लिख दिए कमेंट सेक्शन पे। अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो मैं इंग्लिश में भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो the like I was explaining you all people, like please make sure that this more option is what is my Telegram group channel, in which I give you all the market updates, everything, every market update, every uh, any strong signal which I find. Plus I'm available over there even after the live stream. Even after the live stream I am available over there for all of you people help. आपका YouTube चैनल नहीं, मेरा YouTube चैनल का नेम ये है। अगर आप YouTube पे जाते हो, मैं YouTube चैनल का नाम दिखाता हूँ, ये YouTube है यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर सर्च करते हैं, लिखते हैं हम Zbit, ये Zbit दिख पा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, मेरा YouTube चैनल का नाम है Zbit, ये Zbit दिख रहा है, ये Zbit पे क्लिक करो। उसके बाद में पहला ही Zbit ऑफिशियल, यही जो अपना ऐप का लोगो है, वही लोगो है यहाँ पे, इस पर क्लिक करो। एंड फिर उसके बाद में आप, ये लाइव है शायद तक, हाँ ये लाइव स्ट्रीम है, यहाँ पे देख रहे हो अभी मेरा ये लाइव चालू है, ये लाइव है पूरा चालू है। इसके बाद ये पहले के सारे लाइव जितने भी लाइव है ये सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। ये है मेरा यूट्यूब का चैनल, ठीक है। ये मतलब कंपनी का चैनल है जहाँ पे हम लाइव जाते हैं, जीबिट ऑफिशियल लाइव है इसका, ठीक है। आप बस जीबिट डाल दो, थोड़ा स्क्रॉल करो तो आपको दिख जाएगा जीबिट ऑफिशियल। इसके लाइव पे जाते हो तो ये सारे आपको लाइव दिखने मिल जाते हैं। ये लाइव, ये भी लाइव, लाइव लाइव जितने बार भी मैं लाइव गया हूँ आज तक वो सारे लाइव आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। आप बस जीबिट डाल दो, थोड़ा स्क्रॉल, ये हमारा ऐप यूट्यूब पे, ये यूट्यूब है, ये जीबिट है यूट्यूब का। हम बड़े करके भी दिखा सकते हो, ये है मेरा यूट्यूब, ये मेरा यूट्यूब है, ठीक है, जीबिट.com ऑफिशियल। ये हमारा ऐप यूट्यूब पे, ये यूट्यूब है, ये जीबिट है यूट्यूब का। हम बड़े करके भी दिखा सकते हो, ये है मेरा यूट्यूब, ये मेरा यूट्यूब है, ठीक है, जीबिट.com ऑफिशियल। थैंक्स ब्रो, नो इश्यूज ब्रो, नो इश्यूज। Welcome user 628010. Welcome on the live stream. Thank you so much for being a part over here. Thank you so much for coming down to this platform. Really appreciate it. Thanks, bro. No issues, bro. No issues. Welcome user. Okay. So this is resistance should be increasing. That is my first condition for this broadening top. First is buyers, matlab like uptrend should be there. After that, resistance should be increasing, and at a same point, support should be decreasing. Okay, so this is resistance should be increasing. That is my first condition for this broadening top. First is buyers, matlab like uptrend should be there. After that, resistance should be increasing, and at a same point, support should be decreasing. Support should be decreasing over here. Okay, resistance increasing, support decreasing. These are the two things which is required for that. Okay, after that we'll get a breakout. This is our breakout over here. Once we get a breakout, that will be my entry. Stop loss, if you want to keep it. If you don't want to keep, don't keep it, because this stop loss is very high. You can keep according to yourself, somewhere in half or whatever you feel like. That's the max I can give a loss or something, which you can do it by yourself. Okay, target, for target I have told you this one thing, the distance between R2 and S2, whatever the distance is, that kind of distance of target which you can easily achieve in the market. Understood? Now every of those things I told you, entry, target, stop loss, according to yourself, I have explained you this. Now same pattern will look in the market. How does this pattern look? Okay, from starting, broadening, top. Understood? Now every of those things I told you, entry, target, stop loss, according to yourself, I have explained you this. Now same pattern will look in the market. Let's see some broadening top patterns. From starting, broadening, top.
Resistance increasing, support decreasing. We'll find it, we'll find, okay, we'll find it. Resistance increasing, support decreasing. We'll find it, we'll find, okay, we'll find it. Yes. Can we see our broadening top pattern over here? This is our broadening top pattern, in which what we can see, resistance increasing, support is also decreasing. This is a decrease of support, increase of resistance. Yes. Can we see our broadening top pattern over here? But it's not that accurate, so I'll find more accurate one. In which what we can see, I need a proper accurate one for your understanding. Proper one. This is a decrease of support. Let's go in 60 minutes. Maybe in 60 minutes we can find it easily. But it's not that accurate, so I'll find more accurate one. I need a proper accurate one for your understanding. Proper one. Let's go in 60 minutes. Maybe in 60 minutes we can find it easily. We'll find it, we'll find it. 1 second, support increasing, it's increasing. It's not that much increasing. Resistance increasing, support decreasing. No. Resistance increasing, support. Yes, you can consider this as resistance increasing, support decreasing. Yes, we have found our broadening top pattern. Okay. Can we clearly see here over our broadening top pattern? If I point it out, market came up. From here, we are having. No, bro, this is also not. Yes, we have found our broadening top pattern. Okay. Can we clearly see here over our broadening top pattern? If I point it out, market came up. Support is decreasing, but we are having not that much. Per one. Proper one being required. Support is decreasing, but not that much. Per one. Proper one being required. Yes, can we see our broadening top pattern over here? Finally, I found it. Okay, this thing and this thing. Can we see over here? It looks like exactly the time what I showed you in here. Like it looks like a crocodile mouth which is open over there. Yes, we can see exactly the same situation. Finally, I found it. Okay, this thing and this thing.
It's not working. Not start working. I want to know how much more I will need to transfer when trading with USD. Is it how how can I trade with this one? So first you need deposit when trade for currency. I've already deposited. Alright, man. Okay, they are doing it, so it's fine with me. So here. So as we can see over one thing over here, broadening top pattern, we saw the market was in an uptrend. This is the uptrend of the market, even though resistance came from a very that point, but it's fine. Then after that, first support, resistance, and we got a breakout over here. I told you this one thing very clearly in the market that wherever you see, first thing what we required is the market should be inside a downtrend, uptrend. Can we see the market is in an uptrend? Okay. Can we see the market is in an uptrend, making higher high, higher low, higher high? Market is going up. After that, we require resistance to be increasing and support to be decreasing. Can we see support was over here, then it fall, then over here, then it fall, right? Similarly, we can see at the resistance as well, resistance increasing where R1, R2, everything is above. All the conditions are matching for us. All the conditions are looking good. That resistance is falling, support is going good, everything is looks good. Okay. After these things, what do we observe? What is that one thing we need for the market? Okay, that is a breakout. Whenever the resistance line is giving us a breakout over here, that is an exact point for us to take an entry. We took an breakout entry over here. Okay, I told you what is a target. Target is distance between R2 and S2 is how much? 1.59. We'll see from the breakout point. Can we see? It's almost 1.94. Can we see the same target? The distance between R2 and S2 is a distance. Distance between R2 and S2 is how much? 1.155. Can we see exact target from my breakout entry? 1.55 ended over here, but market gave us still here, which is almost 1.9. So you can consider 2% of profit you got from the market. Okay. Simple, very easy to understand. The same target will give you your entry as well. Stop loss, like I said to you, don't go for stop loss. Either if you want to go for stop loss, have a very small stop loss, don't have a big stop loss. Okay. Cool. So this is a broadening top pattern for all of you people. Okay, this is how a broadening top pattern looks like. Got it? Easy to understand. It's not that hard, right? Either if you want to go for stop loss, have a very small stop loss, don't have a big stop loss. Okay. Cool. So this is a broadening top pattern for all of you people. Okay, this is how a broadening top pattern looks like. Got it? Easy to understand. It's not that hard, right? There is a comment on a YouTube says, hello मेरा withdrawal नहीं होता है, reply नहीं मिलेगा, blah blah. What you need? What? There is something going in my chat as usual. I usually withdraw from this platform. It's not a scam, it's a real one. Comment on a YouTube says, hello what happened to my withdrawal नहीं होता है, reply नहीं मिलेगा, blah blah. What you need? What? There is something going in my chat as usual. I usually withdraw from this platform. It's not a scam, it's a real one. Reply. What happened to my at the rate Revira? Your deposit is not happening because your withdrawal. Sorry. My bad. Withdrawal. Your deposit not happening because minimum because your withdrawal. My bad. Minimum withdrawal is 5 USD.
You cannot withdraw less than. You cannot withdraw. That's the issue. That's the issue. Okay. Okay. Cool. And Noor Alam, I want to tell you this one thing. Yeah. Okay. Okay. Cool. And Noor Alam, I want to tell you this one thing. I will show you 1 second. Balance, withdrawal, crypto withdrawal, USDT. Okay, let's see. Just a second, replying to the Telegram channel over here. 1 second. Can okay. Okay. ROI means return on investment in percent. Okay. Helped a lot of people in the Telegram. There are 2 to 3 things which happens. That's why. Return on investment in percent. Okay. So let's discuss. Helped a lot of people in the Telegram. There are 2 to 3 things. Our last pattern, which is an ascending triangle chart pattern. Okay. Let's discuss our last chart pattern over here. 10th. Our last pattern, which is an ascending triangle chart pattern. Ascending triangle pattern over here. This is our last pattern, which I'm going to explain you all people. After that, I'm going to leave. Bro, I'm not feeling good in my health wise. I'm unable to speak. Ascending triangle pattern over here.
Let me just draw the pattern, how it looks like. Ascending triangle chart pattern, for example. See, ascending triangle chart pattern can come from wherever it wants. It can be in uptrend as well, or it can be in downtrend as well. There is no such things as it can form in uptrend or it can form in downtrend, but it will surely give you a bullish movement. Okay, so it will look like something like first resistance, then like this, second, this, third, this, and from here we can get a breakout. Okay, this is exactly how a ascending triangle chart pattern will look. It will have the same resistance will be a same, but the support will be increasing gradually. Somewhere around here we can reach. This is the, yeah, you can clearly see support is increasing and resistance is staying at same or similar. It cannot be at a same price. If we are at the same price, well and good, but even if it's not at same price, it can be a little different. That is totally fine by the market. Totally fine. Little difference is fine. Little, not big. Little difference is fine. Understand these things. Okay, little, just a very small distance in the market is completely fine. Okay, the first thing, what do we observe over here? As the market is an active buying, there is an active buying in the market over here, which is pushing the market up. Okay, pushing the market. Sorry. My bad, my bad. Okay, the first thing, what do we observe over here? As the market is an active buying, there is an active buying in the market over here. First, do we see is active selling in the market. Nowadays, volume is low in crypto. Yes, nowadays volume is low in the crypto because of the institutional people are not investing inside the market. That's why all the people right now, what do you see is all the retailers like you and me kind of people who don't have very big money to invest in the market. You make the trade with 100, 200, or maybe less than that. I take a trade with 100, 200. That's all. So this 100, $200 is nothing for crypto market, because the overall, if you can understand the crypto markets market capital stands at trillion. If you want to move a trillion amount of market, then you need to invest in that huge amount. And that movement comes from where? Comes from these institutional people, whales, and big players in the market, which none of them are right now in the market because of one thing. See, right now Trump is trying to make so much movement in the geopolitics, a lot of movement. He stole the Russian sanction oil. He attacked on Venezuela, captured Venezuela. Right now, he's going for Greenland as well. He's shifting the geopolitics very drastically in a month. That's the one reason right now there is a lot of fear inside the market. That's why this institutional people or the big player or the corporate people, they are not investing in the market. That's the reason why we can see that there is a no volume in the market, because there is a lot of uncertainty in where in the geopolitics which can make the market fall again. There is a possibility. This possibility, keep a track on Trump's news. This possibility can come from there itself. If you want to know how it can happen, when it can happen, blah 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 situation, make sure that you are understanding. भाई इतनी भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आती मुझे. ओ यू आर इंडियन, आई थॉट यू आर फ्रॉम. मैं ये बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में समझाता हूँ. हिंदी में मुझे हिंदी आती है, सॉरी. ठीक है, ऐसा बोल दिया करो, अच्छी बात है. ऐसा बोल दिया करो कि हिंदी में समझा. मैं हिंदी में समझाता हूँ यार, मेरे अपने भाई लोग हैं, मुझे आती है हिंदी. ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज बताता हूँ कि क्रिप्टो में वॉल्यूम क्यों नहीं है इस टाइम पे. क्रिप्टो में वॉल्यूम इसलिए नहीं है कि जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग होते हैं, जैसे हो गए अपनी मेटा प्लैनेट, अपना माइक्रो स्ट्रेटेजी, ब्लैक रॉक सीईओ, ब्लैक रॉक का जो आईबिट है, अब ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं ना, ये इन्वेस्ट करना छोड़ चुके हैं मार्केट के अंदर. ये हम देख रहे हैं कब से? ये हम देख रहे हैं दिसंबर नवंबर से. ठीक है, अब ये क्यों छोड़ चुके हैं? क्योंकि
हमने एक चीज नोटिस किया है कि अगर आप ट्रम्प या यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रम्प है उसकी अगर न्यूज फॉलो करते हो, वो क्या कर रहा है जियो पॉलिटिक्स न्यूज में। हाय हाय यूजर 944928, हेलो वेलकम। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम एक्सप्लेनिंग टू माय ब्रदर वन थिंग, आफ्टर दैट आई विल कम टू यू। ओके, तो जैसे मैं समझा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, अभी जियो पॉलिटिक्स का न्यूज जो है वो इम्बैलेंस कर देना है। ठीक है, इम्बैलेंस कर देना का मतलब क्या होता है, वॉर एस्केलेटेड सिचुएशन ज्यादा हो गई है मार्केट के अंदर, मतलब वर्ल्ड के अंदर। पहले उसने ट्रम्प ने क्या किया, रशिया का ऑयल जो एक शिप था वो उसने चुरा लिया, बिना किसी को बोले बिना किसी को पूछे, जिसपे रशिया ने उसको बोला कि मैं न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट देता हूं अगर तू ऐसा सब करता है। ये पहली चीज हो गई। दूसरी चीज उसने क्या किया, वेनेजुला पे अटैक किया। वेनेजुला के अंदर क्या था, 17.3 ट्रिलियन का ऑयल, क्रूड ऑयल है वहां पे वेनेजुला के अंदर। 17 ट्रिलियन का, मिलियन भी नहीं, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियन की बात कर रहा हूं। उसने वो जब्त कर लिया मार्केट में ट्रेड लाने के लिए। इस न्यूज से थोड़ा मार्केट ऊपर उठा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठा। क्यों? क्योंकि अगर एक चीज नोटिस करना, अगर क्रिप्टो मार्केट को ध्यान से समझना है तो वर्ल्ड का पॉलिटिक्स समझो। अगर कहीं पे भी वॉर होता है जिससे हमारा वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो बढ़ता नहीं घट जाता है, कोई भी ट्रेड हो, ऑयल का ट्रेड हो, अनाज का ट्रेड हो, लोहे का ट्रेड हो, किसी भी चीज का अगर ट्रेड जो बहुत काम आता है इन्वेस्टर, कंपनी, इंडस्ट्री को चलाने के लिए, अगर वो ट्रेड हल्का सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो मार्केट में टेंशन बढ़ जाता है और मार्केट गिर जाता है। समझ में आ गया बात? आपने वो मूवी देखी है क्या, एक स्टॉक मार्केट की मूवी थी जिसमें यूएस पे अटैक हुआ था, वो 9/11 का टेररिस्ट अटैक की वजह से क्या हुआ, बॉर्डर क्लोज कर दिए गए, बॉर्डर क्लोज हो गई और सारी ट्रेड बंद हो गई, सारी ट्रेड बंद हो गई, क्या हुआ, स्टॉक मार्केट पूरा नीचे क्रैश हो गया। सेम सिचुएशन, अगर कहीं पे भी कोई भी वॉर होती है और वो ऐसी कंट्री है जहां से बड़ा बड़ा ऑयल, अनाज, लोहा, मिनरल्स, ये सब ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये वो जगह है जहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं, अगर वही एरिया मैंने बंद कर दिया और ये ट्रांसपोर्ट होना बंद हो गया तो क्या होता है, ट्रेड में इंबैलेंस आ गया, वर्ल्ड का ट्रेड घट जाएगा। ये वर्ल्ड का ट्रेड जैसी घट जाता है वैसी क्रिप्टो का प्राइस घट जाता है नीचे। अगर वर्ल्ड का ट्रेड बड़ा हो जाता है तो क्रिप्टो का प्राइस भी ऊपर चले जाता है। अभी जब वेनेजुला में ट्रंप ने अटैक करके 17 ट्रिलियन का ऑयल जब्त किया, अब इसने ये क्यों किया, पागल तो है नहीं वो, किसी बस रखने के लिए किया है, उसने वो बेचने के लिए किया है। तो जैसे ये 17 ट्रिलियन का ऑयल मार्केट में बिकेगा तो क्या मिलेगा, मार्केट का ऑयल का ट्रेड ऊपर चले जाएगा और क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर चले जाएगा साथ ही साथ। अभी क्रिप्टो मार्केट का वर्ल्ड ट्रेड से क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता, बट ये ऐसा होता है, जब भी वर्ल्ड का ट्रेड गिरता है क्रिप्टो मार्केट भी गिरता है, जब भी वर्ल्ड का ट्रेड कोई भी अच्छा बढ़ जाता है क्रिप्टो मार्केट भी बढ़ जाता है। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। शुरुआत में 2025 के जैन की शुरुआत में हमने क्या देखा था, शुरुआत 2025 के जैन की शुरुआत में हमने ट्रंप ने टैरिफ अटैक लगा दिए थे, सारी कंट्री पे टैरिफ अटैक लगा दिए थे, 100%, 50%, 25%, 90%, 80%, ऐसा उसने हर एक कंट्री पे टैरिफ लगा दिया था। अभी टैरिफ मतलब क्या होता है कि अगर मैं यूएसए से इंडिया में ट्रेड करना चाहता हूं तो मुझे एक गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है, तब जाके मैं अपना अमेरिका का जो भी गुड्स, माल या जो भी है वो मैं इंडिया में बेच पाऊं। ठीक है, इसके लिए मेरे को गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है। अब उसने वही टैक्स बड़ा कर दिया, बहुत ही बड़ा कर दिया, 100, 25, 50%। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेड नॉर्मली होते थे, यहां से जो इंडिया से सामान जो अमेरिका जाता था बेचने के लिए वो कम हो गए, ट्रेड कम हो गई। सेम चीज अमेरिका ने बाकी लोग के साथ भी किया, सब जगह से अमेरिका में ये आना, कोई भी ट्रेड के लिए गुड्स आना, सामान आना, वो कम हो गए, ट्रेड कम हो गई। ट्रेड कम हुई, पूरा क्रिप्टो मार्केट गिरा नहीं गिरा, जनवरी फरवरी में पूरा क्रिप्टो मार्केट डाउन था। क्यों? इस टैरिफ अटैक की वजह से। जहां पे भी इस दुनिया में अगर ऐसी कोई चीज, कोई प्रेसिडेंट, कोई मिनिस्टर या कोई भी ऐसी चीज
जो ट्रेड को कम कर दे, वर्ल्ड का ट्रेड। ऐसा नहीं कि तुम्हारा किराने दुकान की बात नहीं कर रहा हूं मैं कि तुम्हारे किराने दुकान में चावल नहीं आ रहे तो क्रिप्टो मार्केट गिर जाए, ऐसा नहीं। वर्ल्ड की ट्रेड, अगर वर्ल्ड की ट्रेड कोई भी अनाज की, ऑयल की, लोहे की, मिनरल की, कोई एनर्जी की, इन सब चीजों की अगर ट्रेड गिर जाती है तो क्रिप्टो मार्केट भी गिर जाती है। अब इस पॉइंट पे अगर आज की बात करें हम, तो इंस्टीट्यूशनल पीपल पैसा नहीं डाल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जिससे मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये सारे लोग जितने भी है, इन सबको पता है कि अभी गवर्नमेंट, जो यूएस की गवर्नमेंट है, जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है, वो बहुत कुछ बड़ा बड़ा कर रहा है। एक ही साथ में धड़ 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 बड़े बड़े न्यूज फेंक रहा है। पहले उसका रशिया ने ऑयल फेंका, उसने वो न्यूज फेंका एक हफ्ते के अंदर। उसी हफ्ते उसने वेनेजुला का ऑयल पे अटैक, वेनेजुला पे अटैक करके ऑयल ले लिया। उसके बाद आज कल की न्यूज बता रहा हूं मैं, ये कल की न्यूज है। कल की न्यूज में क्या हुआ, उसने बोला है, सीधा वार्निंग दिया कि ग्रीनलैंड, एक तो तुम मैं एक इजी ऑफर देता हूं, एक तो तुम इजी ऑफर लेके पूरी कंट्री मुझे दे दो, या फिर मैं एज अ वायलेंस, मिलिट्री के थ्रू, फोर्स के थ्रू मैं वो कंट्री ले लूंगा। एक तो आसान वे से भी मेरे पास काम हो जाएगा, नहीं तो मैं मुश्किल वे से भी काम कर दूंगा, काम कर दूंगा, ये मैं कंफर्म हूं। मतलब ग्रीनलैंड यूएसए के अंडर चले जाएगा, ये तो कंफर्म है। एंड वो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे, अगर वो उसने सीधा सीधा एक कॉन्फ्रेंस में, तुम एक गवर्नमेंट ट्रम्प का कॉन्फ्रेंस देख सकते हो, उसमें ट्रम्प ने सीधा सीधा बोला है कि ये जो भी है, मतलब ग्रीनलैंड, ये अगर मैं अपने कब्जे में नहीं लूंगा, ग्रीनलैंड उतना कोई पावरफुल कंट्री नहीं है, वहां पे मिलिट्री मतलब ना के बराबर ही पकड़ के चलो तुम, ठीक है? तो अगर ये चीज, ग्रीनलैंड अगर मैं यूएसए कब्जे में नहीं लेता है, तो रशिया और चाइना उसे ले लेगा। इन दोनों से पहले मैं ही उसे कब्जे में ले लेता हूं, इस वजह से वो ग्रीनलैंड पर अटैक करने वाला है। उसको तो ऑफर देगा, एक इजी ऑफर, ऐसा नहीं कि अटैक होगा ही होगा। उसने बोला कि मैं एक इजी ऑफर दूंगा, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो फिर मैं भेजता हूं अपने लोग, ठीक है? ये दो चीजें उसने बोली। अब इस वजह से क्या हो रहा है, एक वॉर का थोड़ा हल्का हल्का एक, मतलब वो कर रहा है, उंगली कर रहा है, वो एक वॉर की एक उंगली कर रहा है कि हो सकता है कुछ छिड़ सकता है, कुछ वॉर छिड़ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है चीजें। तो उस वजह से सारे इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेट पीपल क्रिप्टो में पैसा डालने के लिए राजी ही नहीं है, क्योंकि उन्हें एक चीज पता है, क्रिप्टो मार्केट जब गिरता है ना, वो 1000-2000 पॉइंट नहीं गिरता नीचे, वो कम से कम 50 से 60 हजार पॉइंट नीचे गिरता है। हमने देखा कि एक 126 पे मार्केट था हमारा, क्रिप्टो मार्केट 126 पे था। वो क्रिप्टो मार्केट 126 से कहां गिरा है, 88 पे गिरा था, 84 पे, लास्ट 84 पे गिरा था। कितना डिस्टेंस है वो, बहुत बड़ा मार्केट गिरा है वो। तो ये ऐसा मार्केट हमेशा क्रिप्टो में ही गिरता है, क्योंकि वो बहुत वोलेटाइल है, कभी भी गिर सकता है और कैसे भी गिर सकता है, और कैसे भी ऊपर जा सकता है, ये उसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है? तो वॉल्यूम क्यों नहीं है? इंस्टीट्यूशनल की पीपल अभी पैसा नहीं लगा रहे। पैसा क्यों नहीं लगा रहे, उसका कारण भी मैंने बता दिया। ये 4 5 6 से 7 8 कारण है जिसकी वजह से कोई भी लोग अभी पैसा डालने को रेडी नहीं है। एंड ये हो सकता है ये मार्च तक कंटिन्यू चलेगा, क्योंकि मार्च के बाद में पैसा आने के चांसेस ज्यादा है। क्यों, उसका भी कारण मैं बताता हूँ कि अगर अच्छा स्पॉट का बाय करना है ना, कि स्पॉट में क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करनी है तुम लोगों को, तो मार्च तक वेट करो या फरवरी के एंड तक वेट करो, क्योंकि वहां तक मार्केट के गिरने के चांसेस है। जहां मार्केट गिर सकते हैं वहां पे हाथ क्यों डालना है, जहां जल सकता है हाथ वहां डालना ही क्यों है? मार्च के बाद क्यों बता रहा हूं मैं? अब मार्च में क्या होता है, हम न्यू ईयर मनाते हैं दिसंबर को, 31 दिसंबर हमारे लिए न्यू ईयर होता है। ये सबके लिए नहीं होता है। फाइनेंशियल जो न्यू ईयर होता है वो मार्च में होता है। मार्च में इनका फाइनेंशियल का न्यू ईयर खत्म हो जाता है, और उसके बाद नया फाइनेंशियल का क्वार्टर चालू हो जाता है। तो जनवरी फरवरी ये ऐसे टाइम होते हैं जहां पे ये बड़े बड़े लोग ना पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं देखते, क्योंकि उनका फाइनेंशियल का ईयर एंड है, जहां पे मेरा ईयर एंड खत्म हो रहा है, वहां पे मैं पैसा लगा के क्या करूं, ऐसा वो लोग सोचते हैं। और क्वार्टर 1 में जब उनका नया साल चालू होगा फाइनेंशियल का, तब वो नए 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 इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। ये आखिरी 2 मंथ में जो भी उन्होंने पहले कर चुके हैं शुरुआत से, वो
धीरे 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 क्लोजिंग करना चालू करते हो, क्लोजिंग कर रहे हैं अभी, जनवरी फरवरी फाइनेंशियल की क्लोजिंग है, पकड़ के चलिए। मार्च से नया क्वार्टर चालू होगा और मार्च से नया इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा मार्केट के अंदर। वो भी हम देखने मिलेगा अगर ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक्स्ट्रा की चीजें ना करे, जैसे ये वॉर ऐसे सिचुएशन, इस पे कब्जा उस पे कब्जा, वर्ल्ड का ट्रेड इंबैलेंस ना करे तो फिर सब सही है। अगर वर्ल्ड का ट्रेड इंबैलेंस करेगा तो फिर मार्केट नीचे ही नीचे गिरती चली जाएगी, ठीक है, वो भी हम देखने मिलेगा। समझ में आ गई चीज? ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, अगर ऐसे ही मार्केट के अपडेट चाहिए होता है तो प्लीज मेरा ये टेलीग्राम का चैनल है यहाँ पे, ठीक है, ये मोर के ऑप्शन पे क्लिक करो एंड ये यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल, जो पहला चैनल फैंस लिखा हुआ है यहाँ पे, टेलीग्राम ग्रुप फैंस करके लिखा हुआ है, ये पहले ग्रुप पे आप ज्वाइन करो, ठीक है। एंड इस पे मैं सारे अपडेट देता हूँ मार्केट के, कि मार्केट में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कुछ पॉलिटिकल न्यूज है क्या, जियो पॉलिटिकल न्यूज है क्या, कोई वर्ल्ड का ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, या फिर कोई सिग्नल भी होते हैं, वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज मेक श्योर करो कि ये टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करो मेरा, ठीक है, इसमें मैं सारे अपडेट देता हूँ, प्लस कुछ चेंजेस होते हैं जीबीट में तो वो भी मैं बताता हूँ। इसी के साथ साथ अगर आज आपको 200 यूएसडी फ्री चाहिए, 200 यूएसडी की बात कर रहा हूं मैं, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, अगर वो फ्री चाहिए तो ये लाइव स्ट्रीम का डिपॉजिट बटन देख रहे हो, इस लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट के बटन पे क्लिक करके आप डिपॉजिट कीजिए, कितना, 20, 20 बस। अगर ये लाइव स्ट्रीम पे डिपॉजिट पे क्लिक करके आज आप 20 यूएसडी डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना मिलता है, 200 यूएसडी, 10 गुना ज्यादा मिलता है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको एक गिफ्ट सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, गिफ्ट, इस पे क्लिक करो एक बार, इस पे जानो क्या दिख रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट रिवॉर्ड लिखा हुआ है, कितना है डिपॉजिट, 20, और मिलेगा कितना, 200 यूएसडीटी। अब ये 200 यूएसडीटी ऑब्वियसली बात है ये विड्रॉ नहीं हो पाएंगे, क्यों, मतलब कोई तुम्हें फ्री का पैसा दे तो तुम विड्रॉ कर लो, ऐसा होता है क्या, नहीं, उससे तुम्हें ट्रेड लेने के लिए पैसा दिया गया है, ये जो पैसा तुम्हें दिया गया है ये ट्रेड लेने के लिए दिया गया है, इससे ट्रेड लो एंड फिर इथेरियम और बिटकॉइन में दोनों में जहां पे भी तुम्हें बड़ा पैसा मिल रहा है उस बड़े पैसे को लगा के जो प्रॉफिट कमाओगे वो तुम्हारा प्रॉफिट है, उसको तुम फिर विड्रॉ करना चाहते हो विड्रॉ करो, उसके तुमने नाचना है तुम नाचो, उसके तुमने झूमना है तो झूमो, वो तुम्हारी मर्जी होती है फिर, ठीक है। पर करना क्या है, लाइव स्ट्रीम के थ्रू ही डिपॉजिट करना है, ठीक है। ये यहाँ पे लाइव स्ट्रीम का डिपॉजिट है, जहां पे तुम क्लिक करके कितना, 20 यूएसडीटी, $20 यहाँ पे डिपॉजिट करोगे, जो तुम इंडिया के हिसाब से, मैं तुम्हारे इंडिया का पैसा बताता हूँ, वो इंडिया के हिसाब से होता है कुछ 1800 के आसपास, 1800 के आसपास वो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे करो एंड पाओ 200 यूएसडीटी फ्री में। इसके अलावा भी एक चीज बताता हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको एक डोज कॉइन फ्री में चाहिए, फ्री, कोई उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हर नए यूजर को मिलता है, यहाँ पे दिख पा रहे हैं, न्यू यूजर बोनस 1 डोज कॉइन फ्रॉम यश। कौन है यश, ये यहाँ पे बैठा है यश, मैं हूँ यश, मैं देता हूँ एक डोज कॉइन सब फ्री में, कितने लोगों को, सब लोगों को, सब लोग, कौन कौन होनी चाहिए, पर वो कंडीशन क्या है, नए यूजर सिर्फ, पुराने वालों को तो बता दिया मैंने 200 यूएसडी है तुम्हारे लिए, नए यूजर के लिए एक डोज कॉइन प्लस 200 यूएसडी भी है, अगर तुम 20 करते हो तो है। पर अगर सिर्फ तुम्हें ये 200 में इंटरेस्टेड नहीं है, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यार तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें नहीं चाहिए 200 यूएसडी, तो तुम्हें अगर सिर्फ एक डोज कॉइन चाहिए तो तुम्हें क्या करना है, ये मेरे लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट पे क्लिक करो, जैसे ही आप ये लाइव स्ट्रीम के डिपॉजिट पे क्लिक करते हो, मिनिमम $3, सिर्फ $3 अगर तुम डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में, ये मेरे अकाउंट का पैसा नहीं है, तुम मेरे को चैरिटी नहीं दे रहे हो, मैं पैसा नहीं चाहता, तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक भाई, ठीक है, ये मेरा पैसा नहीं है। अगर यहाँ पे तुम अपने ही अकाउंट में $3 डालते हो, डिपॉजिट करते हो, जो होता है तुम्हारा इंडिया के हिसाब से कुछ 300 के आसपास बनता है, ठीक है, जैसे ही वो करते हो तो आपको क्या मिलता है, मेरी तरफ से एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री। समझ में आ गई ये चीज, अगर एक डोज कॉइन कंप्लीटली फ्री चाहिए तो क्या करना है, आपको ये यहाँ पे डिपॉजिट बटन पे क्लिक करके डिपॉजिट करना है, मिनिमम 3 यूएसडी, मिनिमम 3 यूएसडी डिपॉजिट करोगे कितना मिलेगा, एक डोज कॉइन मिलेगा। बट ये चीज मुझे बतानी भी होती है, ठीक है, ये बताओगे कहाँ पे,
ये मेरे लाइव स्ट्रीम के ग्रुप में यहाँ पे ज्वाइन करो एंड वहां पे मुझे बोल दिया करो, यश मैंने डिपॉजिट कर दिया है, 1 डोज कॉइन भेज दे भाई, मैं भेज देता हूँ। ठीक है, डिपॉजिट करोगे कितना मिलेगा, 1 डोज कॉइन मिलेगा। समझ में आ गई चीज, मुझे बतानी भी होती है। ठीक है, अभी हमारा मैं लास्ट पैटर्न यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। इसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पैटर्न कैसा होता है कि पहले तो मार्केट गिरती हुई होती है, ये मेरी मार्केट हो रही है, गिर रही है। ये असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है जहाँ पे मेरी मार्केट गिर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्टिव सेलर बैठे हुए, मतलब सेलर बैठे हुए जो मार्केट को ऊपर प्राइस से नीचे प्राइस पर ढकेल रहे हैं। सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद में क्या होता है कि सबसे पहले मार्केट पहले बनाता है एक सपोर्ट, जहां से भी एक प्राइस गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, एंड फिर वहां से वो गिरना रुक जाती है। मतलब क्या होता है कि वहां पे सपोर्ट पड़ा हुआ है कि इसके नीचे नहीं जा पाई मार्केट और यहां से फिर ऊपर चली गई, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। सपोर्ट का सीधा सीधा मतलब होता है कि यहाँ पे सेलर जो है, इनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है और फिर यहाँ पे बायर्स घुस गए, जिसने थोड़ा हल्का सा मार्केट ऊपर ले जा दिया, इसे हम बोलते हैं एस। फिर मार्केट ने बनाया एक R1 जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जहां पे सेलर घुस गए और नीचे गिरा दी मार्केट। ये मेरा मार्केट ऊपर जा रही है, अब यहां से ऊपर नहीं जा पा रही, हम क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए एक इमेजिनरी लाइन बना देते हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ बैरियर है जहां से मार्केट और ऊपर नहीं जा पा रही और यहां से फिर गिरना चालू कर देती है। तो ये क्या हो गया मेरे लिए, एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया कि बार बार मार्केट एक जगह पे आ रही है और वहीं से गिर जाती है। अभी गिरना होता है सेलर के लिए, मतलब यहां पे क्या आ गए, यहाँ पे सेलर एंटर हो गए थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता था, कि उन्होंने ऐसा एक में बात किया था सब लोगों ने एक साथ में कि यार देखो 92 पे हम सब सारे सेल हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं करता है। एक समझदारी होती है कि यार एक पॉइंट पे सारे जो बायर की जो स्ट्रेंथ थी, समझो एक क्लास में 50 लोग, 50 लोग में से 30 लोग करते हैं सेल और 20 लोग करते हैं बाय, कौन जीतेगा, ऑब्वियसली सेलर जीतेगा। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे भाई, ऐसा तो है नहीं कि एक बंदे ने सेल चालू किया बचपन से आखिरी दम तक सेल ही करता रह जाएगा, ऐसा तो है नहीं। सेलर कभी बायर भी बनता है, तो इनकी मेजोरिटी बदलती रहती है। पहले 30-20 था, कभी 20-20 हो जाएगा तो एकदम सेम हो जाएगा, कभी फिर बायर 30 हो जाएंगे, सेलर 30 हो, सेलर 20 हो जाएंगे, कभी बायर 40 हो जाएंगे तो सेलर 10 हो जाएगी, ऐसा ही बदलते रहते हैं, इनकी मेजोरिटी बदलती रहती है। इनकी मेजोरिटी जो बदलती है वो होता है, वो क्रिएट करता है एक सपोर्ट, जहां पे बायर की मेजोरिटी ज्यादा हो गई वहां वो सपोर्ट क्रिएट करता है और वहां से मार्केट ऊपर जाता है। जहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, मतलब सेलर की मेजोरिटी बढ़ जाती है, वहां से मार्केट गिर जाता है। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे हैं, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पर। असेंडिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट बढ़ते 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 जा रहा है, इसलिए ये है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट। ठीक है, ये मेरा सपोर्ट का प्राइस था, उसके ऊपर S2 बना, उसके ऊपर ही है S2 की लाइन ड्रॉ करता हूं, उसके ऊपर ही मेरा S3 बना। ठीक है, हर जगह मार्केट हल्का 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 ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट बढ़ते जा रहा है और रेजिस्टेंस में एक चीज देखता हूं कि एक तो सेम लेवल पे है या फिर हल्का फुल्का ऊपर नीचे चलता है। जरूरी नहीं कि भाई एक प्राइस बोला है तो एक प्राइस से ही गिरेगा, नहीं, थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस चाहिए कि एक जोन में बढ़ा रहे ये रेजिस्टेंस, ये ना गिरे ना उठे, ये एक जोन में बना रहे रेजिस्टेंस। ठीक है, जहां से भी हमें फिर एक ब्रेकआउट का वेट करना है, ब्रेकआउट। ये जब सपोर्ट जहां पे एक ऐसा मूवमेंट आएगा, S3 बनाएगा, S2 बनाएगा, S3 बनाएगा, जितने सपोर्ट बढ़ते जाएंगे उतने बायर घुसते जाएंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे ये जितने सेलर थे ना, ये सारे के सारे चले जाएंगे और मार्केट में कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं होगा। उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे होगा ब्रेकआउट। मतलब जो एक प्राइस पे बार बार आके मार्केट गिर जा रही थी नीचे, अब उस पॉइंट पे गिराने के लिए सेलर ही नहीं है, तो ये मार्केट उधर रुकेंगी क्या, नहीं रुकेगी। ये क्या करेगी, ये प्राइस पे आएगी, इसको तोड़ देगी और इसको ऊपर लेके चली जाएगी। अब ये है वो मेरा पॉइंट ब्रेकआउट, यहां से मुझे मिल जाएगा ब्रेकआउट, यहां मैं करूंगा अपनी एंट्री। लास्ट का जो सपोर्ट होगा वहां पर मैं लगाऊंगा क्या, SL। और मेरा प्रॉफिट कितना होगा, ये होगा मेरा डिस्टेंस R1 से लेके S1 तक का जो डिस्टेंस है वो होगा मेरा प्रॉफिट। ठीक है,
अभी ये सेम चीज मैं मार्केट के अंदर दिखाता हूं कि दिखती कैसी है। जो सपोर्ट होगा वहां पर मैं लगाऊंगा क्या, एसएल, और मेरा प्रॉफिट कितना होगा, अभी ये होगा मेरा जो अभी का मार्केट चालू है, अगर देखा जाए तो ये अप ट्रेंड बना रहा है मार्केट में। अगर अभी करंट की बात करूं मैं, करंटली बीटीसी में एक अगर ट्रेंड आ सकता है तो वो है अप ट्रेंड आ सकता है। क्यों? ये पहले मार्केट गिरी, उसके बाद में मैं क्या एक चीज देख रहा हूं कि सपोर्ट मेरा बढ़ते जा रहा है और रेजिस्टेंस बहुत सेम लेवल पे ही है मेरा। सेम पैटर्न दिख रहा है मेरे को, ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया वैसे ही दिख रहा है। अब हमें वेट क्या करना है, ये शायद तक नीचे तीसरा सपोर्ट ले, ये तीसरे सपोर्ट के बाद में जब भी ये प्राइस रेंज के पास में इसने ब्रेकआउट दे दिया, मैं यहां क्या लूंगा, एंट्री। और टारगेट कितना है मेरा, मैंने क्या बोला, R1 से लेके S1 का डिस्टेंस कितना है, ज्यादा नहीं है, 0.71 ही है, ठीक है, उतना ही मेरा ये टारगेट है। यहां तक इजी टारगेट मुझे मिल जाएगा मार्केट। समझ में आ रही है बात? ये एक हो गया। एक मैं और एक दिखाता हूं पैटर्न, R1 से लेके S1 का डिस्टेंस, सेम चीज देख पा रहे हो मुझे यहाँ पे, ये मेरा असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। क्या मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने एक ही जगह से रेजिस्टेंस लिया, ये सब सेम जगह से है, यहां से गिरी, फिर वहीं पे आई, फिर गिरी, फिर वहीं पे आई, फिर गिरी। बट एक चीज मैं नोटिस करता हूं मेरे इसमें कि सपोर्ट मेरा ऊपर जाते जा रहा है, सपोर्ट मेरा बढ़ रहा है, राइट? वही ट्रायंगल पैटर्न जो मैंने बनाया था, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, वहां पे पहले मार्केट गिरी, इसने बनाया सपोर्ट वन, फिर बनाया रेजिस्टेंस वन, फिर बनाया सपोर्ट टू, फिर बनाया रेजिस्टेंस, वहीं से फिर हमें मिला क्या, एक ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट हमारा क्या है, ये हमारी है एंट्री। तुम्हें क्या बोला था, टारगेट कितना मिलेगा, जितना भी डिस्टेंस हो R1 से S1 का उतना तुम्हें टारगेट, बट ये तुम्हारा सेफ टारगेट होता है, ठीक है? तुम्हारा सेफ टारगेट क्या होता है, डिस्टेंस होता है कहां से, R1 से लेके S1 का, ये सेफ एंड सिक्योर टारगेट होता है, ठीक है? बट अगर तुम्हें रिस्क लेना है, थोड़ा हल्का रिस्क लेना चाहते हो, तो रिस्क में क्या है कि जहां से भी मार्केट गिरने की शुरुआत की है, ये मैं वहीं से क्या बना लेता हूं, अपना टारगेट। समझ में आ गई चीज, सिंपल सी चीज है, कोई हार्ड नहीं थी, इजी अंडरस्टैंडेबल चीज है, ठीक है? तो ये है मेरा आखिरी पैटर्न जो मैंने समझाया, असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। यहाँ पे मेरा टॉपिक खत्म, ठीक है? माय टॉपिक ऑफ रिवर्सल चार्ट पैटर्न इज एंडेड ओवर हियर। Now from tomorrow, I will explain you continuous chart pattern. I told you there are two parts in chart pattern. One is reversal, another one is continuous. Our reversal topic is ended. Now from tomorrow, I will start the continuous chart pattern. Okay. So in between, if you guys have any doubt, anything you want to ask me, feel free to comment on the comment section. Plus there is a telegram group over here. Can you see a telegram group? Yes, you can come on this telegram group, this telegram group, join it and you will see this thing, zbit.com live with yes. Just join this group and be a part of it. Okay, that's all. I'll see you guys tomorrow. Okay, tomorrow I'll see you same, no, tomorrow is Monday my timing will be 4 to 8. Monday I will come on 4 to 8 timing. Got it? Monday is 4 to 8, tomorrow is Monday, so I will be coming at 4 to 8 in the live stream evening. Okay, so tomorrow I'll see you 4 to 8. Bye bye, thank you so much for joining this live stream, thank you so much for being a part. Do not forget to do the deposit and make sure to join my telegram channel. I'll see you all guys